Greetings, everyone. So today we will be talking about GSTAT, the GST Appellate Tribunal, for which we all have been waiting for past more than 8 years, I would say. And in this video, we will be talking about certain filing pointers considering the Act, GST rules, yani CGST rules, along with the SGST and UTGST rules, and also the GSTAT procedural rules. So in this case, we have to add on another pointer, and that is GSTAT rules, procedural rules also become applicable. Friends, because these rules are very, very lengthy, around 124 rules are there. So we will be taking up, as of now, the filing issues. In the months to come, we will definitely be touching upon the other issues like how to file rejoinders, how to file IAs, yani interlocutory application, what are those, with some graphical diagrams. So right now, let me just share the PPT with all of you. And here it is. I hope you all can see it on your screen. Let me make the slideshow. All right. So what we say is GSTAT is in action now. And friends, it is not only GSTAT that is coming, and it's not only about filing. According to me, filing, pleading is an art. How you do it, how you make another person come into the foot of the taxpayer and understand the issues, what are being dealt with. And furthermore, this GSTAT is a final fact-finding authority. After this, your facts will not be considered by either High Court or by any other forum. So make sure that whatever the reconciliations are there, what are facts you are producing, should be properly presented. और sir, GSTAT का मतलब है a complete knowledge about the law. So we will see how through the various case laws, various case studies, we will be dealing about certain issues like pre-deposits कैसे करने हैं, किन केसेस में एप्लीकेबल है, कहाँ कोर्ट फीस लगेगी, नहीं लगेगी. So with this, I just start the PPT for the day. And yes, सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन से कहां से पावर ली गई है ट्रिब्यूनल बनाने के लिए. ट्रिब्यूनल्स आर द स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बेसिकली. एंड आर्टिकल, लेट मी जस्ट मार्क इट हियर, आर्टिकल 300 and let me just mark it. Oh, it's not coming up. Allow me a minute. Yes. So Article 323 in the Constitution of India gives the power to the formation of the tribunals. There are various types of tribunals, like Article 323A talks about the public service matter tribunals, and 323B talks about the other tribunals like tax tribunals, labor tribunals, and such other tribunals. So our GSTAT also is the part of this 42nd amendment of the tribunals through Article 323B that has come into picture. So ये तो एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन से कहां से पावर लेके ट्रिब्यूनल बना है, ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन दी गई है, और ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन जीएसटी में, सीजीएसटी में सेक्शन 109 में है, एंड साइमल्टेनियसली प्रोविजंस हमारे एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी में भी चलते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द प्रोविजंस 109 से 116 तक जो सेक्शंस हैं वो GSTAT के साथ डील करते हैं. There are rules also, and this is the chart right in front of you, which you can see how the tribunal provisions are contained in the act as well as the rules. So we will be discussing these act and the rules in the next slides. And there are various forms for filing appeal to the tribunal. We have GSTAPL 05, appeal form to the tribunal. So the first appellate authority we used to have GSTAPL 01, and here we have GSTAPL 05 form. So friends, there are approximately 124 rules, which is comprising of 15 chapters. And you can see for the hearings, for institution of appeals, how the cost list will be there. All these rules are bifurcated chapter-wise. So out of these, we will be discussing certain practical rules for the filing and all in this PPT or in this webinar. Friends,
What is the speciality about GST? From scratch till end, it is a digital portal. You have no mechanism, or I would say the manual documents will not be accepted. तो पहला क्वेश्चन आता है, क्या अपील ऑनलाइन जानी है? आंसर इज यस, आपकी अपील ऑनलाइन फाइल होनी है, चाहे आपका पिछला एपेलेट ऑर्डर ऑन द पोर्टल था या नहीं था, अपील ऑनलाइन जाएगी। आपकी जो कोई भी डॉक्यूमेंट है, इवन डिपार्टमेंट अगर यानी ट्रिब्यूनल जो बेंच है, अगर आपको कोई नोटिस इशू करेगा तो वो भी पोर्टल पर आएगा, वो भी अदरवाइज नहीं आएगा। सेकेंडली, जो पोर्टल पे हियरिंग्स होंगी जो ट्रिब्यूनल की, वो हाइब्रिड मोड में होंगी। यू कैन इवन ऑप्ट फॉर द वर्चुअल हियरिंग्स और यू कैन इवन गो फॉर द physical hearings over there, but all the documents will be submitted online with no manual submissions. So it's complete electronic filing. Yes, when you will read certain rules out of it, तो आपको कुछ manual touches मिलेंगे. So the GSTAT is considering amendments to the rules, and we will see that in the times to come. So talking about अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आ रहा था यहाँ पे, and let me ask you all. सर, यहाँ पे सेक्शन 111 दिया गया है और वो सिर्फ CGST एक्ट का दिया गया है। सो आई वाज वंडरिंग, क्या ट्रिब्यूनल का जो प्रोसीजर लेट डाउन हुआ है वो सिर्फ CGST के सेक्शन 111 से पावर लेकर हुआ है? सो व्हाट अबाउट द सिमिलर नोटिफिकेशंस, हैव दे कम इन SGST और UTGST? So the answer is no, separate notifications are required to be given because it is a body which is regulating its own procedure. And this is a single GST appellate tribunal for CGST also, for SGST also, for UTGST also, for IGST also. So as a result, there is no requirement of separate SGST procedures once the tribunal has given its code that how the hearings and the filings and the procedure will be conducted. So there is no need of separate SGST set of rules for governing the tribunal functioning. Now coming towards next, अच्छा, वहां पे तो हमने फॉर्म्स देखे जो हमारे एक्ट में आते हैं या हमारे रूल्स में प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाय टेकिंग पावर फ्रॉम द एक्ट, जिसमें हमने अभी APL 05 की बात करी थी फॉर ट्रिब्यूनल फाइलिंग ऑफ अपील्स, और APL 06 है फॉर क्रॉस ऑब्जेक्शंस. Likewise, forms are also prescribed in the GSTAT procedure rules, and whenever you are filing that, जैसे आप कोई वकालतनामा या अथॉरिटी लेटर फाइल कर रहे हो तो उसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अपील जाएगा. अब वो मेमोरेंडम ऑफ अपील कहाँ और कैसे जाएगा, that is the prescribed in the GSTAT procedure rules which have come in the month of April 2025, and the tribunal started its actual working from 24/9/2025. So these are the certain forms which are given in the procedure. अच्छा, डिपार्टमेंट ने भी कैसे कॉज लिस्ट मेंटेन करनी है? अब somebody asked me what is a cause list. So cause list means आने वाले टाइम में आपके जो केसेस लिस्ट होने जा रहे हैं उसकी जो एक लिस्ट बनती है, और ये भी ऑनलाइन आएगी. अभी ये लिस्ट वीकली है, बट द प्रपोजल इज देयर, सॉरी डेली है. So अभी proposal is there to make it weekly cause list in the times to come. How the court diary will be maintained, how the provisional register or provisional appeal register will be maintained. So these are also the internal e-office forms also which are given in the GSTAT procedural rules. Friends, एक होती है adjudicating authority जो आपके, मैं सिंपल बोलूं तो 73, 74 के ऑर्डर्स एक्सेट्रा पास करके, आई एम नॉट गोइंग टेक्निकली इनटू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. Then comes the appellate authority. These are the forums which are the authorities appointed under the law. After that comes the appellate tribunal which is given under section 2 clause 9 of the GST Act, और इसका constitution हुआ है section 109 में, जो हमारा पहला सेक्शन था, if you remember in the list, right? एक क्वेश्चन में हमेशा पूछती हूँ, क्या राइट टू अपील हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? आंसर इज नो. राइट टू अपील इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट्स अ स्टैट्यूटरी राइट. स्टैट्यूट देगा तो आप अपील फाइल कर सकते हो, स्टैट्यूट नहीं देगा तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते हो. अगर ऐसा होता कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता तो फिर शायद नॉन अपीलेबल डिसीजंस एंड ऑर्डर्स का ये सेक्शन 121 होता ही नहीं. So it clear cut shows that if statute gives you the power, only then
their appeal can be filed, and if it is not given, no appeal can be filed. And what is the difference between appeal and writ? Friends, appeal is filed in the normal hierarchy, in the normal course, whereas writ is filed when there is breach of fundamental rights. So because it is a breach of fundamental rights of that very person, so when we go to the high courts through the normal hierarchy, I will share the hierarchy in the next slide. So then it has more value and it set precedents for the lower courts. Whereas writs is against the fundamental rights of a particular taxpayer. So it does not carry that value, rather it carries the persuasive value. So coming towards, क्या डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है? यस, जहां आप फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी पे केस जीत चुके हैं, तो डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो लिटिगेट, बट डिपार्टमेंट के लिए एक थ्रेशोल्ड रखी गई है जो कि सर्कुलर 207 में भी कंप्लीटली एक्सप्लेन की गई है. हाई कोर्ट के लिए जैसे लिमिट 1 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ थी, जीस्टैट हैज अ लिमिट ऑफ 20 लाख. सो 20 लाख से नीचे डिपार्टमेंट अपील फाइल सिर्फ कुछ सर्कमस्टांसेस में करेगा, जैसे कहीं क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या certain other exceptions are there. Otherwise इस threshold से नीचे अपील फाइल नहीं की जाएगी. Where there are certain order, instructions, circular, whether those are held, are to be held ultra vires or not, only then this below threshold appeals will be filed by the department. I'm not talking about the taxpayer. Department file तब करेगा. So otherwise आपकी जो नॉर्मल अपील डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट लिटिगेट करेगा, दैट इज फॉर 20 लाख रुपीज, अबव 20 लाख रुपीज. तो अब ये 20 लाख कैलकुलेट कैसे होगा? तो सर्कुलर क्लियरली एक्सप्लेन्स कि जहां टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी होगा, हम सिर्फ टैक्स का अमाउंट लेंगे. जहां डिमांड ऑफ इंटरेस्ट होगी, सिर्फ कहां डिमांड ऑफ इंटरेस्ट होगी? 180 days, etc., etc. Various other pointers are there. So जहां डिमांड ऑफ इंटरेस्ट होगी, only interest will only be considered. जहां डिमांड ऑफ पेनल्टी होगी, then penalty is to be considered, and where there is a demand of late fee, the late fee will be considered. So likewise they have given various other scenarios also कि किस किस तरह से ये थ्रेशोल्ड जो है वो कंसिडर की जाएगी. ये अर्लियर लिमिट्स है जो सीस्टैट के टाइम पे थी, यहाँ जी तब 50 लाख थी, अब 20 लाख है. फ्रेंड्स माइंड है, जीएसटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग्स. And secondly, litigation in GST is very expensive. So do adhere to timings, or वैसे भी we are sitting on the fag end, last 15 days of filing of tribunal appeals for all those orders that have been passed before 31st March 2026. So gear up, portal takes time. The first few filings you need to go through the form, you need to understand, you need to make the papers. Although leniency is there as of now, but still we need to gear up. We need to understand the portal and do the filing. So do not wait for the last moments and should start filing the appeals. So appeal not to be filed in certain cases, that is department's prerogative, that okay, like they have fixed the monetary limits, and certain other when there are orders, instructions that okay, appeal will not be filed, so department may skip filing the appeals, even sometimes it exceeds the monetary limits. अपील फाइलिंग हमेशा ऑर्डर के अगेंस्ट होती है. नोटिस, समन एंड आपको एफआईआर आती है ना, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, उसके अगेंस्ट भी अपील फाइलिंग नहीं होती है, because FAR is also not an order. FAR के बाद SCN आएगा, SCN के बाद आप अपील फाइल कर सकते हैं. So coming towards the GSTAT, जिसके लिए हम सब geared up हैं. फर्स्ट लेवल ऑफ अपील के बाद अपील टू एपेलेट ट्रिब्यूनल जाती है. एपेलेट ट्रिब्यूनल इवन एंटी प्रॉफिटेरिंग केसेस का एडजुडिकेशन भी करता है. अदर देन द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के बाद जो अपील्स जो हैं वो सेकंड फॉरम एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास आएंगी. टाइम पीरियड 3 months है अपील फाइल करने का फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर बाय द फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, जिसको 3 months तक डिले कॉन्डोन किया जा सकता है ऑन शोइंग द रीजनेबल कॉज. राइट? So this is our second level, and then we follow the normal hierarchy, but then High Court and Supreme Court. लेकिन except PB, सर अभी हम बात करेंगे कि ट्रिब्यूनल 2 तरह से बनेगा. एक प्रिंसिपल बेंच है ऑल अक्रॉस इंडिया और बाकी स्टेट बेंचेस है.
प्रिंसिपल बेंच की जो अपील आएगा, जो ऑर्डर आएगा, वो उसकी अपील हाई कोर्ट में नहीं जाएगी, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगी. सो यू नीड टू बी वॉचफुल, यू नो, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द प्रिंसिपल बेंच. In that scenario, the one one leg of appeal to High Court gets skipped. So it directly goes to the Supreme Court. Now, कैसा रहेगा हमारे ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन? So friends, section 109 of CGST Act में Constitution of Appellate Tribunal और उसके benches के बारे में बताया गया है. सबसे पहले section 109 subsection 1 कहता है कि गवर्नमेंट और काउंसिल की रिकमेंडेशन पर Appellate Tribunal establish किया जाएगा, जो एक second authority रहेगा for hearing the appeals. Apart from that, it can also be hearing the cases against the orders passed by the revisional authority under section 108, and also it will do the examination or adjudication of the anti-profiteering cases. So इसके अलावा भी ट्रिब्यूनल को एक नेशनल appellate authority of advance ruling, national authority of advance ruling की तरह भी प्रोजेक्ट किया गया है, and that we will see in the next amendment. और जो एंटी प्रॉफिटेरिंग केसेस है उसके रिगार्डिंग भी सेपरेट जो अमेंडमेंट थी that has been brought in. So now the tribunal will be having two sets of benches. One is the principal bench, which will be sitting at New Delhi only, and the state benches, which will be constituted throughout the state. There are 31 benches that have been announced, and those are operational in almost 45 places as of now. So friends, जो हमारे बेंच बनेंगे उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहेगा? जो प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में होगा, that will have 4 members: president, judicial member, technical member center and technical member state. अच्छा, hearing चारों करेंगे? No, hearing will be done by 2 members at a time. So one technical member with president and one judicial member and the technical member together. So judicial and technical member का जो bench है, जो division bench है, वो constitute किया जाएगा. And likewise in state there are going to be 2 judicial members, one technical member center and one technical member state. So this is how the constitution of benches has been planned, of the principal bench as well as the state benches. This is what about 31 state benches जो different locations में आए हैं. And now you can see, as there is one bench in Punjab state, so one is then area wise the area is bifurcated. So as I told you, in Punjab there is one bench. Accordingly, this one bench in Punjab will be sitting at Chandigarh and Jalandhar. So even the location wise, the jurisdiction of the district is being given to the various benches कि कौन सा region किस में fall करेगा, and how some of those are going to be the circuit benches जो कि टाइम टू टाइम लगाए जाएंगे, जहां पर कि जो केसेस है वो टेकअप होंगे एज पर द नंबर ऑफ केसेस अवेलेबल. सो जो सर्किट बेंच है उसके साथ सर्किट लिखा गया है, अदरवाइज नॉर्मल सिटिंग बेंचेस जो हैं वो ये सारी प्लेसेस पे चलेंगे. दिस इज द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द स्टेट बेंचेस. सो अब पंजाब में स्टेट बेंच तो एक है, बट द one judicial and one technical member, one judicial and another technical member will be sitting in Jalandhar and Punjab. So 2 locations पे ये bench जो है operational रहेगा. So likewise for every state it has been given. Apart from that, कौन से हमारे technical members जो है वो appoint किए गए हैं, the circular with respect to that, the names, the technical members of center, who are those, all those notifications have already been issued. The president of the tribunal, Dr. Sanjay Kumar Mishra, Honorable Justice Dr. Sanjay Kumar Mishra, has already taken the charge of the tribunal. And as I told you, for all the orders passed before 31st March 2026, it is the 30th June 2026, which is the last date. Initially, एक staggered manner दिया गया था for filing of appeals in GSTAT, but later on that staggered manner stands withdrawn. अच्छा, अब कौन सा मैटर है जो प्रिंसिपल बेंच सुनेगा और कौन सा मैटर है जो स्टेट बेंच सुनेगा? प्रिंसिपल बेंच ऑल अक्रॉस इंडिया एक ही है,
State benches multiple है, 31 sitting at 45 locations. And the principal bench क्या सुनेगा? एक तो order of appellate authority under section 107, order of revisional authority under 108. Principal bench can hear those orders जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई के इश्यूज इन्वॉल्व है, वो एक्सक्लूसिव पावर है प्रिंसिपल बेंच की, उसे स्टेट बेंचेस नहीं सुन सकते. एंटी प्रॉफिटियरिंग का एग्जामिनेशन और एडजुडिकेशन जो है वो भी प्रिंसिपल बेंच करेगा. और देखिए यहाँ पावर दी गई थी कि एनी अदर केसेस और क्लास ऑफ केसेस जो है वो टेकन अप किए जा सकते हैं बाय प्रिंसिपल बेंच, एंड नोटिफिकेशन टू दैट एस्पेक्ट हैज ऑलरेडी बीन इशूड. वो मैटर्स जो प्रिंसिपल बेंच सुन सकता है. So what are those other matters is, one is when a matter is pending before two or more state benches and where the president is satisfied that there is an identical question of law is involved and it is identical, nothing is mentioned कि पैन सेम होना चाहिए, पैन डिफरेंट होना चाहिए. So चाहे वो सेम पैन में है, चाहे वो डिफरेंट पैन में है. सो ये क्या प्रिवेंट करेगा कि डिफरेंट स्टेट बेंचेस एक ही क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिफरेंट ओपिनियंस ना दे दे. सो विद द president this power lies that if he is satisfied they can take up the identical question of law at the principal bench. So one the where the principal bench has the power to take the identical question of laws which are pending before two or more state benches. This consolidation option as of now is not directly available on the portal. Friends, ऐसा है ना कि जहां तो place of supply है, you can just go, you will put there place of supply issue, yes, it will be marked to the principal bench. But as such, no such facility that it is pending before the other state benches or not. And it is the prerogative of the president. So that is why you can go for the consolidation application on the portal. For example, अगर मेरे ही एक ही पार्टी है, उसका कोलकाता, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश केस चल रहे हैं, so they want the consolidation of those matters because it involves identical question of law, they can file an application for the same and that will be taken up by the principal bench. Other than that, OIDAR और input service distributor जो है, इसके जो रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, जो अपील्स में इनके रिलेटेड इश्यूज अगर इन्वॉल्व है, सो दैट विल आल्सो बी टेकन अप बाय द प्रिंसिपल बेंच. सो इस नोटिफिकेशन के अलावा नेशनल एपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को भी प्रेजेंटली द एक्सप्रेशन एग्जिस्टिंग अथॉरिटी में भी ट्रिब्यूनल जो है वो ऐड कर दिया गया है. So tribunal will also act as national appellate authority for the advance rulings until or unless any other authority is being formed. Right? So whenever there is conflicting ruling by state authority A and state authority B, advance ruling I am talking about, so tribunal will act as a national appellate authority for advance ruling. So ये कुछ वो matters थे जो prerogative of only and only principal bench आते हैं. But now my question comes to you, why these have been kept under the principal benches only? Friends, सबसे पहले जो place of supply matters हैं, you need to be very vouchful कि place of supply matters जो हैं, अगर आपका कोई भी, अगर आपके पूरे order में एक single issue involving even 10,000 rupees of default involves place of supply issue, your application will exclusively be heard by the principal bench. And no appeal to High Court will lie against the same. It will directly go to the Supreme Court. For state benches, the appeal lies to the High Court. So the law does not prescribe any materiality threshold. So I told you, even if you have the slightest of the dispute of place of supply, it will go to the principal bench. So I have given the examples also. अगर आपका entire demand 1 करोड़ का है and just 10,000 rupees place of supply है, तो it will go to the principal bench. So आपको देखना है कि आपको उसको 10,000 को litigate करना है या नहीं करना है. So if any of the appeal relates to, not the order, appeal relates to place of supply issue, then it will go to the principal bench. So whether a place of supply issue, sir, a place of supply issue is also a very big point to discuss. जैसे वन ऑफ माई स्टाफ मेंबर आज की, हमारा तो इनपुट बनता था CGST और SGST में, ऑफिसर ने IGST में कह दिया कि आपने एक्सेस इनपुट लिया और वाइस वर्सा.
these are not place of supply issues. These are the, according to me, these are the anomalies, these are the defects in the order, these are the mistakes in the order rather than involving place of supply issue. And on these clerical issues, it will lie with the state bench only. So availing input of ITC for IGS, this involves like you can say place of supply issue is कि अगर एक पर्सन जो आपकी स्टेट में आया है उसने यहाँ से गुड्स परचेज किया है, नंबर बाहर की स्टेट का दिया है, वेयर द मूवमेंट इज एंडिंग. So all those issues are place of supply issue, and in that case the appeal lies to the principal bench. Now friends, इसमें question आता है कि क्यों. So I have given the reason. 49th of 53rd council meeting में it was taken कि because states are involved. There can be a revenue biasness by the states. So as a result, to maintain the absolute neutrality, the entire matter is given under the principal bench and not the state benches. और इसीलिए उसको हाई कोर्ट की jurisdictions में भी नहीं रखा गया, and that will lie to the Supreme Court only. So apart from that, कि आर्टिकल 269A भी प्लेस ऑफ सप्लाई की जो प्रोविजंस है वो उसको पार्लियामेंट के अंडर रखता है, एंड नॉट अंडर द स्टेट इज नॉट liable to make law on the same. So considering all those things, the place of supply issues lies only and only with the principal bench. So friends, I have given certain case studies also. जैसे आपके सामने है कि एक टेक बेस्ड स्टार्टअप है बैंगलोर में, और वो एक बैकएंड सपोर्ट दे रहा है यूएस बेस्ड क्लाइंट को. दे ट्रीट इज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, एंड आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस इन लेंथ एज ऑफ नाउ, बिकॉज इसी तरह का एक जजमेंट जो डाउ केमिकल्स का है वो ऑलरेडी the order has been passed by the appellate tribunal. So for that you can refer the video. उसमें भी intermediary services को डिस्कस किया गया था. So ये PPT actually उसके आने से पहले बनी हुई है. So that is why I have kept it here. So what it is कि wherever the issues of place of supply are involved, and that Dow Chemicals you will also see, क्योंकि उसमें place of supply issue है. 13(8)B में वो intermediary बनेगा नहीं बनेगा, उसका place of supply रहेगा या क्या उसका place of supply होगा, IGST लगेगा या CGST SGST लगेगा. All these issues are to be taken or at the prerogative of the principal bench. And like bill to shift to procedural errors, so bill to shift to में भी रहता है कि revenue belongs to which state. So accordingly, these जो pointers हैं, that will go to the place of supply issues, and it will go to the principal bench. Place of supply is a non-editable field. So जब भी आप इसको yes or no करेंगे, बड़े ध्यान से करना, नहीं तो आपको एप्लीकेशन डिलीट करनी पड़ेगी और दोबारा से सारी एप्लीकेशन अपलोड करनी पड़ेगी. So be watchful as to place of supply. It freezes once you upload it. Or you answer it, it freezes. Now apart from that, जो प्रेसिडेंट है वो अपना जर्नल और स्पेशल ऑर्डर के साथ केसेस ट्रांसफर कर सकते हैं, बिजनेस डिवाइड कर सकते हैं. तो क्या जलंधर का केस कोलकाता भी जा सकता है? यस, देयर इज नो बार दैट इट शुड बी गिवन टू द सेम स्टेट बेंच. मतलब ऐसा नहीं है कि जलंधर का सिर्फ चंडीगढ़ जा सकता है. It can be transferred, the business can be divided by the president amongst the various benches. स्टेट बेंच में जो 2 जुडिशियल मेंबर है, उसमें जो सीनियर मोस्ट जुडिशियल मेंबर होंगे, दैट विल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट बेंचेस. He will have the power to exercise the powers of president as may be prescribed, exercise the powers of the president, but for all other purposes he is a normal member. सब VPs की लिस्ट आ गई हुई है, और वो कौन से बेंच में कौन कौन VP है, that I have already placed for you. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी अपील होगी, अच्छा अब पहले तो हमने कहा प्रिंसिपल बेंच पे लाइट करेगी अपील या स्टेट बेंच पे करेगी. अब प्रिंसिपल बेंच यानी वो तो हमने डिस्कस किया. नाउ द क्वेश्चन कम्स, क्या सिंगल मेंबर भी अपील सुन सकता है? अभी मैंने कहा था फॉरम क्या रहेगा, जुडिशियल मेंबर एंड टेक्निकल मेंबर. तो क्या सिंगल मेंबर बेंच भी अपील सुन सकता है? आंसर इज यस. जहां टैक्स, ITC, फी, फाइन, पेनल्टी
जो ऑर्डर में डिटरमाइन हुई है, अगर वो 50 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं कर रही है और उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, एंड है दोनों सिचुएशंस में, तो विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड द कंडीशंस, जो अभी मैं रूल 11110A 110A भी डिस्कस करूंगी, can be heard by a single member bench. In all other cases, it shall be heard together by one judicial member and one technical member. Now the question comes, यहाँ तो और लिखा था. So 110A, जो procedure for the appeals to be heard by single member bench, which is brought through the third amendment rules 2025, notified by 13/25 with effect from 22/9/2025, says this or is to be read as and. So scrutinize करेंगे और transfer such appeal to a single member bench if it is within the same state, provided it does not involve any question of law. अब इसके ऊपर आई हैव गिवन द केस स्टडी ऑल्सो कि 18 लाख डिमांड है, 12 लाख उसकी है, पेनल्टी उसकी है. सो व्हेन यू कंबाइन इट, but at the same time there should not be any question of law to go to the single member bench. और इसके लिए सिंगल मेंबर बेंच जो है रेफर बैक कर देगा. इसके लिए प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है दैट हैज बीन आल्सो इशूड, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज का जो रूल 123 है उसको यूज करते हुए ऑफिस ऑर्डर नंबर 3 हैज बीन इशूड कि किस तरह से एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगेगा. फिल्टर कौन करेगा? फिल्टर करेगा जुरिस्डिक्शनल स्टेट डिवीजन बेंच. यानी अपील जो आप जीस्टैट के सामने APL 05 फॉर्म में डालेंगे, वो जुरिस्डिक्शनल स्टेट डिवीजन बेंच के पास जाएगा, यानी JM और TM उसको देखेंगे, केस को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा. अगर वो आपकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकल जाता है, यानी इफ द टेस्ट इज कि हाँ इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है और ये 50 लाख के विद इन है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये सिंगल मेंबर बेंच, देन इट विल गो फॉर द प्रेसिडेंट और VP फॉर द अप्रूवल, and then the case will be formally assigned to the single member bench. और अगर ये फिल्टर टेस्ट क्रॉस नहीं करेगा तो ये डिवीजन बेंच के पास रहेगा. So division bench will be acting as the funnel. After that, the approval of the VP or the president will be sought and the matter will be heard by the single member bench. इसी ऑफिस ऑर्डर में और हाँ, अगर बाद में कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ निकल आता है, सिंगल मेंबर बेंच बोलते हैं नहीं इसमें तो क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, so it will be referred back again upon reasons to be recorded in writing to the president or the vice president, and I have given the case study for that also कि 50 lakhs का थ्रेशोल्ड जो था वो नहीं था या क्वेश्चन ऑफ लॉ में क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो गया था, दैट विल बी रेफर्ड बैक, राइट. If on scrutiny of appeal the fact as to same taxable person within a state, same, yes, this is an issue which I have. They said अगर आपका पहला मैटर सेम पीरियड के लिए या डिफरेंट पीरियड के लिए सेम इशू पर डिवीजन बेंच ने सुना है तो वो सिंगल मेंबर बेंच पर नहीं जा सकता. सर टैक्सेबल पर्सन सेम हुआ, स्टेट सेम हो गई, सेम इश्यू हो गया, बट अगर पीरियड भी सेम हो जाएगा और वो ऑलरेडी हर्ड है, सो दिस इज अ लिटिल कंटेंशियस. देखिए पीरियड डिफरेंट हो गया, ओके 23-24 में वो इश्यू था, 24-25 में वो इश्यू था, टैक्स पीरियड डिफरेंट था, टैक्सेबल पर्सन सेम था, स्टेट सेम थी, पंजाब में ही उसका 23-24 का केस हुआ एंड देन 24-25 का केस हुआ, इश्यू सेम था. लास्ट ईयर भी उसी टॉपिक पे डिस्कशन था. फॉर एग्जांपल इंटरमीडियरी को ले लीजिए, CSR को ले लीजिए, सेम इशू था, बट सेम पीरियड. इट कैन ओनली बी पॉसिबल कि या तो दो ऑर्डर्स पास किए गए हैं, क्योंकि सेम टैक्सेबल पर्सन, सेम स्टेट, सेम इशू, सेम पीरियड. सो सेम पीरियड मींस 2 ऑर्डर्स मस्ट हैव बीन पास्ड फॉर दैट, तभी वो सेम पीरियड होगा. सो अगर वो ऑलरेडी डिवीजन बेंच ने सुना है तो उसको सिंगल मेंबर बेंच नहीं सुने, राइट. सो व्हाट विल बी डन? ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इफ हैज मल्टीपल इयर्स, पीरियड 1 का ITC और आउटपुट टैक्स और पीरियड 2 का प्लस पीरियड 3 का cumulative total will be considered to determine the limit of 50 lakh for the single member bench. So वो जो और था ना उसको and पढ़ना है,
all issues in the order appealed against, all the tax periods which are there in the order appealed against, all those are to be totaled, even the ITC penalty fine are to be accumulated, and then the limit of 15 lakhs will be checked. अच्छा, we were talking about order number 3. Benches जो है वो एक filter की तरह काम करेंगे. Apart from that, the 3 pillar system has been given by GSTAT, category 1, category 2 and category 3 cases. हर केस को जो आप अपील्स फाइल कर रहे हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3. कैटेगरी 1 केसेस में जनरली आईटीसी रिलेटेड, place of supply, time of supply, valuation related issues, which are substantive tax issues are covered. Registration or assessment are almost in category 2, and category 3 has enforcement and residual issues. Penalties are in category 3. 122 की penalty, 129 की penalty. So I have given कि item number 1, 3, 4, 8 जैसे category 1 में भी there are in all total 12 pointers given. So कुछ सप्लाई और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, आईटीसी से रिलेटेड है, लायबिलिटी एंड फ्रॉड से रिलेटेड है, willful suppression, determination of short payment or non-payment, and willful suppression of fraud. All these are taken under category 1. Category 2 are administrative level entries like registration, refunds, assessments. All those are covered under category 2 and category 3. अब इसके अकॉर्डिंग बेंचेस को इंस्ट्रक्शन दी गई है. कुछ बेंच ऐसे हैं जो सारी कैटेगरी के केसेस सारे दिन सुनेंगे, बट देयर आर सर्टेन बेंचेस हु हैव बीन you see Delhi. So category 1 will be on Monday and Tuesday, and category 2 will be on Thursday and Friday. So accordingly, हर area के according, Gurugram में all category will be heard from Monday to Wednesday. Hisar all category via circuit or virtual bench will be heard on Thursday or Friday. So likewise, they have divided it into the 3 parts. You see the northern benches, central and western benches. Apart from that, a proper mechanism see how this will be heard, and different regions have been given different schedule for hearing of category 1, 2 and 3 cases. Friends, मैंने कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 इनका कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं. कैसे 50 लाख की लिमिट क्लब होगी, कैसे वो कैटेगरी वाइज डिवाइड होंगे. All those are the points that has been discussed here. और हम कब से बात कर रहे हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के. So friends, it is very important to determine क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. जहां इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स और स्टैट्यूट्स है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. जहां आपको टेंजिबल एविडेंसेस के बेसिस पर, विटनेसेस के बेसिस पर, पार्टीज कोई ट्रुथफुलनेस को चेक करना है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. रिकंसिलेशंस आर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. आई हैव गिवन अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स. देखिए, सोलर पैनल का आईटीसी मिलेगा कि नहीं इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. सीएसआर वाला अमेंडमेंट जो है वो बैकडेट से लगेगा 17 सबसेक्शन 5 में के प्रोस्पेक्टिवली है, because it is that CSR expenditure is being disallowed at number of occasions by the department. Such issues are question of law, and if sometimes there are mixed also. अब composite supply है या mixed supply है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है. अगर मुझे उसके एग्रीमेंट को स्टडी करना है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करना है, तो वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. अगर मुझे नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है, of course it can also involve the question of law. So there can be mixed question of law and facts also, like I to say 16(2)(b), 16(2)(c) is also a mixed question of law and facts, right? So you need to check that question of fact is what actually happened, and question of law is you are interpreting a statute. So you need to take care. Sometimes वही 16(2)(c) matters क्वेश्चन ऑफ लॉ भी बन सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स भी बन सकते हैं. 16(2)(b) में मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हर पार्टी में एक नया फैक्ट है, एक नया डॉक्यूमेंट है. सो a complete distinction as to question of law and question of fact should be made. Apart from that, अगर आपके मेंबर्स जब आपकी अपील सुन रहे हैं और उनको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलता है, सो दैट केस विल बी रेफर्ड. अगर तो अपील केस 1 है कि अगर आपका अपील ओरिजिनली हर्ड बाय अ स्टेट मेंबर बेंच है, तो वो दूसरे स्टेट
बेंच को चला जाएगा, और इफ नॉट अवेलेबल अ मेंबर ऑफ स्टेट बेंच इन अनदर स्टेट चला जाएगा। एंड इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया कि जीएम को जाएगा या टीएम को जाएगा, तो किसी भी अनदर मेंबर को चला जाएगा। अगर अपील ओरिजिनली हर्ड बाय द प्रिंसिपल बेंच है, सो प्रिंसिपल बेंच में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो अनदर मेंबर ऑफ प्रिंसिपल बेंच को जाएगा, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो मेंबर ऑफ स्टेट बेंच को जाएगा, इवन इफ मैटर इज रिलेटेड टू पीओएस। सो इन दिस इज अ पेक्यूलियर सिचुएशन जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा और प्रिंसिपल बेंच का अनदर थर्ड डिसाइडिंग मेंबर इज नॉट अवेलेबल, सो देन इट विल गो टू द स्टेट बेंच, राइट। सो अल्टीमेटली जो डिसीजन होंगे वो मेजॉरिटी ओपिनियन से होंगे इन द ट्रिब्यूनल्स। गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट्स कंसल्टेशन के बाद ट्रांसफर ऑफ मेंबर्स भी किया जा सकता है फ्रॉम वन बेंच टू अनदर, बट यस द टीएम स्टेट will be in the state bench of same state only. So TM state will maintain the status quo in the same state. The others can be transferred to different states even. 109 subsection 11 says, अगर आपको कोई एक्ट और प्रोसीडिंग्स में डिफॉल्ट में कुछ ऐसे इश्यूज मिलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल में कोई डिफेक्ट था या कोई वैकेंसी थी, so that will not make the proceedings or act questioned or invalid. So it is the thing, जैसे I give you example, TM की एज या क्वालिफिकेशन, उसका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस था, अगर later on that is found not in accordance with the law, उससे जो आपकी प्रोसीडिंग्स है, जो आपके ऑर्डर्स पास्ड है, वो इनवैलिडेट नहीं होंगे। बट यस, इट कैनॉट बी कॉन्ट्रडिक्ट to another provisions of the said section. जैसे 1 करोड़ का मैटर एसएम बेंच ने सुन लिया, नो, आई एम नॉट सेइंग कि इट शुड कॉन्ट्रडिक्ट विद अदर मैटर, इवन देन इट्स ओके। इट इज ओनली अबाउट कि अगर कोई वैकेंसी है, कोई डिफेक्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन था, कोई मेंबर का एज का इशू था, ऑल दोज थिंग्स will not affect your proceedings. Actually, 109 subsection 11 acts as a structural shield. It guarantees that justice delivery system cannot be grind or halted due to HR issues. राइट, आगे भी कंपनीज में पीपल एचआर से बहुत परेशान रहते हैं, तो यहाँ एचआर वाले इश्यूज आपको परेशान नहीं करने चाहिए, और आपका जो लीगल राइट है वो नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, 110 सेक्शन में एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस है, व्हिच आई एम नॉट डीलिंग एज सच। सो मूविंग अहेड, 111। अच्छा, एक बात बताइए, क्या जीस्टैट एक कोर्ट है? इट इज a quasi-judicial body. It is not a court. It is not bound by the Code of Civil Procedure 1908. But it has its own procedure. It has the power to regulate its own procedure. It is also guided by the principle of natural justice. So जब भी आप अपनी अपील ट्रिब्यूनल पे लगाएंगे, you can definitely go for the ground of principle of natural justice wherever the same is not adhered to. So it is applied. It has its own procedure. That is why you could see the procedural rules of GSTAT, right? So this tribunal is not a court in itself, but yes, it is not a civil court in the particular sense, but it has many powers as are vested in the civil court. ये समन कर सकता है, enforcing attendance कर सकता है, witnesses को बुला सकता है, affidavits ले सकता है। और friends, please be careful, wrong furnishing of affidavit is a criminal proceeding. So be vouchful whenever the affidavits are being given. It can ask for the discovery and production of documents. It can examine on oath. It can issue commissions. I have mentioned that it is the directive by which a person is appointed to do a particular task. It's called a commissioner. It can decide ex parte. It can dismiss a representation for defaults. It can set aside the orders. But a question comes, can tribunal enhance? Answer is no. It cannot enhance, but can tribunal remand back? Yes, tribunal has the power to remand back. जो appellate tribunal आपका बनेगा, उसमें सबसे पहले केस फाइल होता है, arguments होते हैं based upon the documents, judgment is given, which is really bulky, running into 400 pages.
एंड उसके बाद डिक्री आती है, द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है. सो देन देयर इज एग्जीक्यूशन प्रोसेस. और ये एग्जीक्यूशन जो होगा, अगर कंपनी है तो उसके केस में उसके रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी है, वहां उसका एग्जीक्यूट कराया जाएगा. और जहां ऑर्डर अगेंस्ट एनी अदर पर्सन है, तो जहां पे वो रिजाइड करता है या जहां वो बिजनेस कैरी कर रहा है, वहां पर इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा. सो आई हैव गिवन यू एंटायर सिनेरियो कि हाउ द ट्रिब्यूनल्स वर्क फॉर. जजमेंट आने के बाद उसको एनफोर्स भी तो कराना है, एग्जीक्यूट भी तो कराना है. सो जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, उसमें भी जैसे कोर्ट की डिक्री जो है ना सूट में होती है, लाइकवाइज एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स भी एग्जीक्यूट होंगे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन. द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कंपनी एंड अदर पर्सन बोथ आर गिवन. अगर आप कोई, it's because it is a deemed judicial proceedings. If you are giving any false evidences, you are interrupting the tribunal. It is liable for action under 193 of IPC and 228 of IPC. Appellate tribunal is treated as a civil court for certain matters. So tribunal has the authority to initiate complaints relating to offences such as contempt committed in its proceedings, etc. So these are deemed judicial proceedings. So as a result, all these provisions will become applicable. अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताइए, क्या ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन, आजकल तो वैसे ही मारुति एंटरप्राइजेस एंड साहिल एंड मारुति का जजमेंट और साहिल एंटरप्राइजेस का जजमेंट में बहुत सारी हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करते हैं, सेक्शन 16(2)(c) एंड ऑल की. तो क्या ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर सकता है? आंसर इज नेगेटिव. It is a creation of statute. It cannot check the constitutional validity of a particular provision. So जब भी आप grounds draft करेंगे तो आप constitutional validity के provision को consider नहीं करेंगे. हाँ, ये interpret कर सकता है provision को, apply कैसे करना है transaction पे, examination कर सकता है evidences की, check कर सकता है कि GST officers ने वो provision law के according लगाए हैं या नहीं लगाए हैं. But it cannot make the provisions decide upon whether those are ultra wires or not. Now comes the main section 112. Filing कैसे करें, किन किन चीजों को देखें. So friends, appeal to appellate tribunal. Any person, may it be the entity director, अगर डायरेक्टर को पेनल्टीज लगी है कंपनी के अलावा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसकी सेपरेट अपील फाइल करेंगे. सो कोई भी पर्सन, इवन द एक्स पार्टनर जिसकी लायबिलिटी सेक्शन 90 में आती है, इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, टेम्प आईडी इशू कराना पड़ेगा जीएसटीएन पोर्टल से और उसके अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल में अपील फाइल होगी. So all those persons who are any person, I'm not using the taxable person, whosoever is aggrieved can file appeal in APL 05 form. Friends, मैंने section और rules को combine कर दिया यहाँ पे. So form is given under, but in the PPT you can see that with GSTAT appeal file कर सकते हैं 3 months from the communication. Communication of service is a big issue and tribunal has the power to decide कि एक चीज पोर्टल पे सर्विस तो हुई, पार्टी का नंबर ही बंद था, कैंसल था, तो वो रोज पोर्टल खोलकर थोड़ी देखेगा. सो एज अ रिजल्ट दैट इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन से 3 months डायरेक्टली ट्रिब्यूनल जो है डिले कंडोन नहीं करता है, बट इट कैन, मतलब 3 months तक डिले कंडोन करता है, नॉट बियॉन्ड 3 months. एंड it has the power not to, even for the first appellate authority, this is a very litigative issue. Answer is the tribunal do not have the direct power to condone the delays. But ये मैटर जरूर डिसाइड कर सकता है कि कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है. अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो पीरियड ही शुरू नहीं होगा 3 months का. सो एज अ रिजल्ट वो ट्रिब्यूनल के प्रेरोगेटिव में रहेगा. सो ये मैटर जो है वो ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकता है. अपील टू ट्रिब्यूनल इलेक्ट्रॉनिकली है. अब आप जब भी आप ट्रिब्यूनल में अपील लगाएंगे, एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा.
वो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपकी डेट ऑफ फाइलिंग होगी। जब उसके डिफेक्ट्स रिमूव हो जाएंगे तो आपको एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा। प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर जीएसटी एपीएल 02A फॉर्म के पार्ट ए में आएगा। सो दिस इज द एपीएल फॉर्म। और फ्रेंड्स, दिस एपीएल फॉर्म हैज नंबर ऑफ इश्यूज. What are those filing issues? Let me tell you. First of all, when you will be filling this EPL 05 form, इसका ऑफलाइन यूटिलिटी अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द पोर्टल एंड बट अभी वो ऑनलाइन अपलोड नहीं होता है. सो यू कैन जस्ट मेक इट. यू कैन चेक क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर्म में. कहीं कहीं जो यहाँ एपीएल 05 फॉर्म जो रूल 110 में दिया गया और जो पोर्टल पे एपीएल 05 है, there are certain few minor differences also, right? But this is APL 05 फॉर्म जो इसमें दिया गया है. इसमें यू कैन सी इसके अपने अनेक्चर्स है. अनेक्चर ए, बी, सी, डी एंड ई अनेक्चर्स आर देयर. अनेक्चर ए इज देयर ऑर्डर टाइप. इसमें आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील को और द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को एक पर्टिकुलर वे से देना है. एंड लेट मी जस्ट शो दैट यू सर. ग्राउंड्स ऑफ अपील, केस समरी, etc. have to be limited to 2000 characters. GSTAT is thinking of increasing the characters to 5000, but as of now 2000. अभी तक 20 MB का लिमिट है. This limit is also proposed to be enhanced to 50 MB. So अब जब आप यहां से annexure चूज करेंगे तो पहले मैं बता दूं कि एक तो इसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एक एक लाइन जानिए. क्या उसका नंबर था, क्या उस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में आया, किसने किया, डिपार्टमेंट ने दिया कि आपने दिया. सो वेरी वेरी वॉल्यूमिनस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. आई विल शो यू ऑल्सो इन वन ऑफ माई स्पेसिमेन. लिस्ट ऑफ ऑर्डर टाइप जो हमारा नेक्चर ए था. ऑर्डर टाइप कौन सा है? डिमांड ऑर्डर है, रिफंड ऑर्डर है, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर है, एनफोर्समेंट ऑर्डर है, रिकवरी ऑर्डर है या अदर ऑर्डर्स. सो लेट्स सपोज आपका सेक्शन 73 का इशू है. सो यू विल से इट इज अ डिमांड ऑर्डर, राइट? जब मैं अनेक्चर ए को अनेक्चर सी से लिंक करती हूँ, सो इट सेज ऑर्डर टाइप तो देखिए वही है, लेकिन इसमें शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स तो आ रहा है, लेवी ऑफ पेनल्टी आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट आ रहा है, बट इसमें आईटीसी नहीं आ रहा है. सो where ITC we are going to take is in the recovery order, which is very absurd. So here when you will see type of order, demand order में ITC है ही नहीं, which is covered under the denial or blocking is being covered under this recovery order. Apart from that, जो annexure B है उसमें actually it is a daunting task because you have to give your section and rules yourself. अगर आपके ऑर्डर में नहीं भी लिखे और आपका ये ग्राउंड ऑफ अपील है कि मेरे ऑर्डर में सेक्शन और रूल्स नहीं है, स्टिल पोर्टल सेज यू खुद से सेक्शन और रूल्स डालिए, विच इज अ लिटिल एब्सर्ड सिचुएशन. क्योंकि बहुत सारे नोटिस हमने जीएसटी में देखे हैं, लिखा जाता है कि सामने टैक्स पेयर का नंबर कैंसल्ड है तो आपका आईटीसी डिनाई कर दिया जाएगा. एम आई राइट? In that situation, no section is mentioned. 16(2)B का डिफॉल्ट है, 16(2)C का डिफॉल्ट है, no rule is specified. तो ये सारा काम भी हमें ही करना है. So even if the notice or the order is bereft of the sections or the rules, so this is a point which is really a little difficult for the taxpayer to themselves decide कि ऑफिसर कहाँ ऑर्डर पास करना चाहता था. Right? So case summary you are supposed to give in 1000 characters in each cell. So आप different issues निकाल सकते हो. मेरा registration से related है, ITC blockage से related है, और हर एक के अंदर उसकी specification देंगे आप कि adjudicating authority ने क्या कहा, revisional authority ने क्या कहा, stand of appellant before tribunal क्या थे, और as declared or claimed by present appellant क्या थे. Friends, these last two columns according to me are little overlapping. क्योंकि देखिए adjudicating authority ने क्या कहा, you can put it here. Revisional authority ने क्या कहा, या as determined by the appellate authority you can put here. Stand before tribunal or as declared or claimed by the present appeal. So sometimes we make a difference here. जैसे मेरा total amount 7.5 है, इस अपील पे मैं 4 लाख के लिए जा रही हूँ.
So we sometimes make the difference. Otherwise, I'm usually filling these columns same. कि आपका क्या स्टैंड है, मतलब आप क्या रिलीफ चाहते हैं और आपकी क्या चीजें हैं जो आप ट्रिब्यूनल के सामने लाना चाहते हैं इन द प्रेजेंट अपील बाय द एपेलेंट. सो यू कैन पुट इट हियर इन द लास्ट कॉलम, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, अबाउट एपेलेंट, सर सब कुछ खुद डालना है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या है, उसका स्टैट्यूट अंडर विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड, और अगर वो एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो अब सोचिए अब उसके कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहां से ढूंढेंगे. सो जीएसटी portal GSTAT should look into such aspects of APL 05 form which are not so relevant for deciding the case or might be should be pulled from the GSTN rather than be now putting for the in the appellate form. सो ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कितना बल्कि है, हर एक का रेफरेंस नंबर, एक्शन बाय डेट, ब्रीफ नरेशन, एक एक रो आपको ऐड करनी है. सो गियर अप माय डियर फ्रेंड्स, इट्स हाई टाइम. और ये प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट थी जो मैंने APL 02A में आपको बोली थी, आपको आएगी पार्ट ए में. डिफेक्ट्स रिमूव कर दोगे, उसके बाद फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो जनरेट होगा. इतनी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो GSTAT अपील के साथ जानी है. इवन योर पेपर बुक सबमिशन इन GSTAT इज विद द GSTAT अपील इटसेल्फ. जैसे पुराने रिजीम में 1 मंथ का टाइम पीरियड था, GSTAT अपील्स में वो नहीं है. आपकी पेपर बुक भी सामने जानी है. और फ्रेंड्स, जब आप ग्राउंड्स ऑफ अपील वगैरह बना रहे हो ना, सो कीप योर ग्राउंड्स ऑफ अपील वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, सो दैट जब ऑर्डर बनते हुए भी उनको डील फॉर किया जा सके. डू नॉट मेक इट बल्कि. और यही कारण था कि फॉर्म में भी ग्राउंड्स ऑफ अपील जो है वो 2000 कैरेक्टर्स में मांगे गए हैं, सो दैट द member can get the gist of what you are trying to say in your appeal. But when you are, if you want to elaborate those points, you can put it as the submission part, and all the documents relating to that can be attached therewith. However, considering the new filing of GST appeals, the leniency has been given. 14th May 2026 का लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन था जो कि सक्सीड कर रहा है 20 जनवरी और 10 मार्च के ऑर्डर को, और ये लीनियंसी का डेट 31 दिसंबर 2026 तक दिया गया है. सो इसमें जो रजिस्ट्रार हैं, टैक्स पेयर के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं विच आर वेरी लेस जो उसको अटैच करने हैं. और लाइकवाइज फॉर द डिपार्टमेंट आर ऑल्सो बीइंग गिवन फॉर अ टैक्स पेयर. जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है दैट इज शो कॉज नोटिस, ऑर्डर इन ओरिजिनल, ऑर्डर इन अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड्स ऑफ अपील, pre-deposit and court fee. So these are certain mandatory documents. और अगर आपको कोई कोर्ट से रिलीफ मिला हुआ है, एग्जेम्पशन मिली हुई है एज टू कोर्ट फी और प्री डिपॉजिट, तो आप उसे अटैच करेंगे इन विद दिस इन द कैलकुलेशन शीट और अदरवाइज. एपेलेंट जो कि अपनी अपील फाइल करने जा रहा है, स्कैंड सर्टिफाइड कॉपीज OIA की जो है वो अपलोड करेगा. वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द सर्टिफाइड कॉपीज. और अगर स्क्रूटनी ऑफिसर सेटिस्फाइड है फ्रॉम द एंडोर्समेंट मेड देयर इन बाय इशूइंग अथॉरिटी कि यस ये एक सर्टिफाइड कॉपी है, तो वो डिफेक्ट्स रेज नहीं करेंगे. एज पर द प्रेसिडेंट ऑल्सो द लीस्ट ऑफ द डिफेक्ट्स विल बी रेज्ड and the justice will be imparted. Similarly for the department, there is no court fee, no pre-deposit for the department. पहले हम हर पेज पे डिजिटल सिग्नेचर यहाँ साइनिंग कर रहे थे. Now they have mentioned that one verification and digital signature of the appellant will suffice. And in the times to come, we will be seeing certain instructions also in this clear instruction and change in rule also in this aspect. So friends, there is one rule also as per the CGST rules, rule 110(4), जिसमें कहा गया था कि जब आप डिफेक्ट्स रिमूव कर दोगे और आपका जो अगर ऑर्डर ऑलरेडी पोर्टल पे है तो आपको फाइनल एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी पार्ट बी में, और जो आपका ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट का नंबर था ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग वही आपका जो नंबर है वो कंटिन्यू करेगा, राइट. फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर इज इक्वल टू अपील फाइल डेट. But and also it has been mentioned कि अगर आपका ऑर्डर पोर्टल पे नहीं है तो आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी देनी है,
और 7 days का क्राइटेरिया है, बट आई थिंक सो नाउ व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन ऑन द पोर्टल, this 7 days criteria becomes redundant. Certified copy of order again appealed against as per Rule 21 is getting uploaded with the appeal filing itself. So it is accompanying the form of appeal, and even in leniency, it is not covered and it has to be uploaded. So appeal portal also has a check that appeal cannot be filed until that order is attached. So this rules criteria of 7 days filing, and then the provisional acknowledgement number, if you self-certified copy, all these needs an overhaul. So अब अगर मैं बात करूं कुछ procedural things की, सो जैसे ही आप अपनी अपील फाइल करते हैं, आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। डिफेक्ट्स रिमूव होने के बाद आपको एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, और एज पर रूल 25 ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एडमिटेड अपील भी होगी। ये ई ऑफिस में चलेगा ट्रिब्यूनल के, और वो अपना एक रजिस्टर ऑफ अपील्स इन दिस वे इन CDR 04 फॉर्म दे विल बी मेंटेनिंग इट अप, right? So 110 subsection 4 says that there are two phases of the same registration and event, and they both operate on same appeal number. So register में भी जो आपका appeal number होगा वही आपका final appeal number होगा, और कोई दो separate appeal numbers नहीं होंगे. So now it says that, so I have linked 110(4) and 25 कि 110(4) पे जो डिफेक्ट्स रिमूव होने के बाद आपका अपील नंबर आएगा, रजिस्टर्ड as per rule 25 will also record the same one. However, as I told you कि पोर्टल पे अपलोडेड नहीं है, तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी का क्राइटेरिया 7 दिन में दिया तो आपका जो फाइलिंग डेट है वही आपका नंबर बन जाएगा, और 7 दिन में कॉपी ऑफ सर्टिफाइड ऑर्डर्स नहीं दी तो सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी बाद में दी तो आपकी 7 days के बाद तो डेट ऑफ सबमिशन आपका फाइनल डेट ऑफ अपील बनेगा. However, these are in difference to Rule 21. As I told you, now it is getting uploaded on the portal इकट्ठा ही. So what is the relevance of these 7 days? And furthermore, जब हम Rule 21 भी देखते हैं, सो उसमें भी एक पॉइंट आता है, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट रूल 21(2) सेज अलोंग विद द फी. सो जो 3rd and 4th मीटिंग ऑफ द कमेटी फॉर रेजोल्यूशन हुई है, जो जिसका डॉक्यूमेंट 10th जून को आया है, दैट हैज आल्सो प्रपोज्ड रिजॉल्व टू propose an amendment or proposed an amendment in rule 21(2), stating that a certified copy of the order or order appealed against shall be submitted online, and final acknowledgement shall be issued under the rules by the GSTAT portal. So this what is the change in the rules that has come into picture. तो फ्रेंड्स, मिनट्स ऑफ 3rd and 4th मीटिंग में भी रूल 21 में कुछ चेंजेस जो है वो प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि रूल 21 में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जो आपको अपील फॉर्म के साथ लगाने हैं. सो इफ यू विल चेक दिस रूल, its first part says that the appeal is against an original order. This scenario actually does not exist, that the appeal is against an original order. So there is an anomaly that no criteria is there for filing the appeal to the tribunal against the original order. Yes, where it is against the appeal or revision order, in that case you are supposed to give the order copy as well as a certified copy of the order in original, as well as a certified copy of the order appealed against. OIA and OIO दोनों का certified copy देना है. Additionally, show cause notice, statements, seizure documents, reports, RUDs, all those are to be given. Now you see, Rule 21 is nowhere referring to self-certification. 21(1) में तो issue है ही. Other than that also, it is not referring order uploaded है portal पर नहीं है. So that is why this rule is not going as per what was there mentioned earlier in the rule 110(4) of the CGST rules. And under the standard GST scheme also, section 112 does not provide a direct appeal to
tribunal, so which has been considered in Rule 21(1). Furthermore, this in the meeting of third and fourth meeting of the committee, it has also been decided to change this rule. It has been proposed to amend this rule, and ये जो criteria है first वाला कि order in original के against जाएंगे, that is liable to be amended because there has been found certain defects, and soon we will see this anomaly getting eliminated. और इसमें भी जो क्राइटेरिया है इसको रूल 110 से सिंक करने का कोशिश किया जा रहा है कि जहां पे आपका ऑनलाइन पोर्टल पे ऑर्डर अवेलेबल है तो आपको उसकी सर्टिफाइड कॉपी देने की जरूरत नहीं है. सो यू आर सपोज टू नाउ गिव द सर्टिफाइड कॉपी इफ इट इज नॉट फर्निश्ड ऑनलाइन ऑन द पोर्टल, राइट? सो मूविंग अहेड, so now we can see in the times to come that the सर्टिफाइड कॉपी का डेफिनेशन भी चेंज किया है. उसमें भी सर्टिफाइड कॉपी पहले एआर कर सकता था, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कर सकता था. नाउ दे हैव इंक्लूडेड द पार्टीज, दे हैव प्रपोज्ड टू इंक्लूड द parties also into it. और जहां और this proviso has been introduced with this point that the order appealed against is uploaded on the common portal, then the certified copy of the order appealed against may not be accompanied. So let's see when these changes are actually brought into. Now further it says that as I told you about the certified copy, now you see certified copy का मतलब था original copy होनी चाहिए, कॉपी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट हो सकती है और इनके बीच में, और यहाँ पर वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव चाहे एपेलेंट का हो चाहे रिस्पोंडेंट का वो करेगा. So the term is satisfied by any of these three modes and they are alternatives and not cumulatives. Now it is even proposed that it is by that in the certified copy they will be adding on by the appellant also or by the respondent himself also, that will also be considered as a certified copy. So otherwise self certified को भी certified में include कर दिया गया है. और friends, please make sure that the certified copy is a different term, attested copy is a different term, or certify as true copy is a different term. So in this slide I have categorically mentioned कहाँ certified copy referred है, कहाँ attested copy referred है, जहां department appeal कर रहा है. Certify as a true copy by the authorized representative is a different term which is used in Rule 20 sub Rule 3. और जो आपने फीस देनी है 5 rupees per page, that is to get the certified true copy of the final order. और इसी तरह से रूल 103 में भी एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर पास बाय ट्रिब्यूनल है, विच इज अ डिफरेंट टर्म. सो हियर व्हाट वी डिस्कस वाज द सर्टिफाइड कॉपी, जिसको आप सर्टिफाई करते हैं और आप अपलोड करते हैं. कौन कौन सर्टिफाई कर सकता है, दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. सो अब मैं जरा एग्जैक्ट फाइलिंग पार्ट पर आ रही हूँ. कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे नॉर्मल जीस्टैट अपील के टाइम पर आपको अपलोड करने, अपील्स, एफिडेविट्स का प्रॉपर रूल है. अनेक्जर्स, इम्प्यून्ड ऑर्डर, वकालतनामा. सर वकालतनामा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं देता है, वो ऑथराइजेशन लेटर देता है अलोंग विद मेमोरेंडम ऑफ अपील. वकालतनामा के साथ भी मेमोरेंडम ऑफ अपील जाना है इन केस ऑफ एडवोकेट. पेमेंट का रिसीट, किसका पेमेंट, कोर्ट फी का पेमेंट. और जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो, कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कोई कैलकुलेशन शीट है जो आप कह रहे हो कि मेरी कोर्ट फी और मेरा प्री डिपॉजिट का डिफरेंट कैलकुलेशन है, ऑर्डर इन ओरिजिनल, एपीएल 01, एपीएल 03, प्रीवियस पेमेंट पर्टिकुलर्स, प्री डिपॉजिट्स of the at the first appellate authority, statement of facts, grounds of appeal. So you can see a long document type which you can upload. So this is the entire document type that has been that we were discussing right now. Additional documents can also be as per case to case. जैसे अभी मैं एक आपको अपील दिखाने जा रही हूँ, उसमें आप देखोगे जो मैंने केस लॉज रेफर किए हैं मैंने सारे डाले हैं, जो मैंने रिप्लाई दिए हैं वो मैंने सारे डाले हैं. पर्सनल, अच्छा अगर मैंने ग्राउंड लिया है कि मुझे पर्सनल हेयरिंग प्रॉपर नहीं दी तो मैंने पीएच की लेटर, टेलीफोनिक हुई है, ऑल दोस थिंग्स आई हैव ब्रॉट टू द नोटिस. अगर मेरा इशू ये था कि मेरा कमर्शियल क्रेडिट नोट है, that is covered by not department is covered into the schedule E or the schedule 2 का entry number 5E.
but now there is a circular on the same. So the copy of circular, because circulars are clarificatory in nature, so it will apply for the previous period also. कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जो मेरे हुए हुए हैं जिससे मुझे क्रेडिट नोट्स आ रहे हैं, मेरी ऑडिटेड फाइनेंशियल बुक्स के साथ वो कैसे मैच कर रहे हैं, मेरी बैंक स्टेटमेंट में कहाँ शो है. सो आई हैव गिवन ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट सब्सटैंशिएट माय डॉक्यूमेंट. सो व्हेन यू आर डूइंग द फाइलिंग पार्ट, please be vouchful. That is why I said that filing is an art. Please be vouchful. Unnecessary case laws should not be given. Stick to the specific case laws and be true to the judiciary. So wherever you have, and एक चीज और, फेवरेबल केस लॉ तो आप देंगे ही, सामने वाला अगेंस्ट केस लॉ भी दे सकता है. सो प्लीज मेक इट श्योर कि आपने अगेंस्ट केस लॉज भी पढ़े हो. और अगर कोई ऐसा केस है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें बहुत प्रोमिनेंट अगेंस्ट केस लॉ है, सो ट्राई टू डिस्टिंग्विश इट एंड यू मस्ट एक्सप्लेन the members that this case is not applicable as if in my case, so that the members should have a confidence in you. And you know, it's an art. It's not a scientific rule. I do not say you कि हाँ आप against case law दीजिए pen. No. If you feel a question is directly related and it can come from the judiciary, then try to make a synopsis that how that against case law is not applicable in your case. सर कॉइन का दो साइड्स हैं, तो दोनों हाथ में लेकर चलिएगा. अपने रिकंसिलेशंस 1-3B के जहां जहां एप्लीकेबल है वो बने होने चाहिए. टैक्स इनवॉइसेस, ई वे बिल, जो डॉक्यूमेंट को सब्सटैंशिएट करते हैं. अगर मेरे केस में क्रेडिट नोट्स आए थे तो वो किस इंसेंटिव क्राइटेरिया के बेस पे आए थे, मैंने वो इंसेंटिव क्राइटेरिया भी लगाया. अपने जो रिप्लाई दिए, ऑल दो जो डॉक्यूमेंट्स आप पहले फर्स्ट लेवल पे या एजुकेशन पे ऑनलाइन दे चुके हो, there is no need to file those again. That is a relaxation. But still, if you want to substantiate some points, so you can attach your documents here in the additional document field. And once these defects are removed, so part B of APL 02A is generated for you. अच्छा, जब हम इतना फाइलिंग की बात कर रहे हैं, so should I show you one of my performa for the same? Okay, let me share that. Here it is. Friends, this is my performa. This is how I make my appeals. You may or may not like it, but I am of the opinion that PACE is the index. So I always give my paper book, although it's filed virtually, a complete paper, the first paper, the index paper, not even before index even, the cover page, by mentioning, and these are the certain specifications also I will show you कि कौन सा एपेलेट ट्रिब्यूनल का ये केस है. ये तो रूल्स में भी लिखा हुआ है किस बेंच पे जा रहा है. एंड दिस अपील नंबर, ये मैंने अभी वो अपील नंबर डाला है जो मेरा पोर्टल ने जनरेट किया है. एज सुन एज आई ओपन द पोर्टल, दिस अपील नंबर इज जनरेटेड. आगे मैंने पोर्टल के स्नैपशॉट्स दिए हुए हैं. उस पोर्टल के स्नैपशॉट्स में मैंने बताया कि किस तरह से अपील नंबर वहां शो होता है. एंड सर वहां पे जहां जहां पे स्नैपशॉट्स में एनोमलीज हैं जो ओरिजिनल फॉर्म से मैच नहीं करती हैं, जो हमें दिक्कतें आ रही थी, वो भी मैंने उसमें साथ साथ मार्क की हुई. सो किस ऑर्डर इन अपील के अगेंस्ट था, लेट मी सी इफ इट आई कैन मार्क ऑन इट. या किस ऑर्डर इन, will it allow me? Let me check. No, it is not allowing me. Anyhow, see here. किस ऑर्डर इन अपील के अगेंस्ट था, कौन सा ऑर्डर किसने पास किया है, वो किससे रिफंड रिजेक्शन से ओआईओ कौन सा रिलेटेड था, किस ऑफिसर का था. Then who is your appellant? I have given the name of the entity through its partner, so and so. The and proper parentage. Parentage means to which, what is the address, to where the company belongs, to where the entity belongs, versus I have taken the respondent, the commissioner only. Because as per rule 33, it's always the commissioner. Although portal has an issue that it asks for two respondents, so somewhere we are putting even the passing authority, but as appropriate, it is only the commissioner. And when you select the zone, it will give you the officer online on the portal. So commissioner is the person who is the actual respondent as per rule 33. किसके, अब ये तो मेरा कवर पेज था, कौन सा टैक्स पीरियड था, क्या डेट थी. सी, आई हैव फ्रेम्ड माय
cover page like this, like this. Now, even in the meta, next I give is the index, and you can see it is properly annexure numbers are given, page numbers are given. I have attached 168 pages paper book with all my calculation sheets, with all my wherever, because initially there was error on the portal that वो affidavit लिए बिना आगे नहीं चलता था और मेरे केस में affidavit applicable नहीं था. So what we did, हमने एक specimen just बनाया कि affidavit is applicable in so and so and so rules, and those are not applicable in my case. So hence I am not I am not liable to give the affidavit. So that is also the part of it. So this is the appeal, and in appeal you can see I have given the brief issue in a very summarized way. कि मेरा एक रिफंड था जो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स कैटेगरी में लगा था, जो कि मेरे को गलती से मैंने इंसेंटिव और कमर्शियल क्रेडिट नोट के अगेंस्ट पे कर दिया था. So it was an excess payment of tax, but officer has tried to cover it as a separate service, separate supply माना है, और schedule 5 एंट्री नंबर 5 ऑफ schedule 2 में उसको टैक्स लगाने की कोशिश की गई है. सो ब्रीफ इशू इन डिस्प्यूट. अब याद है वो नेक्स्ट जो बी था जिसमें से हमें ऑर्डर किस चीज का है वो सिलेक्ट करना था. सो आई सिलेक्टेड हियर ऑर्डर डिनाइंग रिफंड. किस सेक्शन में? 54 में. क्या अमाउंट था एंड व्हाट इज माय केस समरी. अब इस केस समरी में मैं देखिए मैंने जितने ग्राउंड्स लिए हैं मैंने उन हर ग्राउंड की एक एक लाइन का छोटी समरी बना के आई हैव डन इट इन 2000 कैरेक्टर्स. फ्रेंड्स कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें स्पेशल कैरेक्टर शो हो रहे हैं. हमारे भी हुए थे जब हमने कोई 2000 कैरेक्टर से एक्सीड किया ना तो उसने उसको स्पेशल कैरेक्टर में चेंज कर दिया. सो इसी वजह से जब आप अपनी अपील्स अपलोड कर रहे हैं तो बी वाउचफुल कि आप उसको एक बार रीचेक जरूर करें कि उसमें कोई गलती तो नहीं है. सो यू कैन सी have kept a little difference between the stand before the tribunal or as claimed by the present appellant, because मेरा total refund 7.5 लाख का था. किस तरह से वो सर्कुलर में कवर्ड है, कौन से पुराने चार्जेस थे, वो सब पॉइंट्स को मैंने यहाँ एक जिस्ट बना के डाला है. अबाउट द appellant, जो जो उसकी डिटेल्स थी that I put here. See, statement of facts are how detailed. It is actually a laborious task. सो ग्राउंड्स ऑफ अपील यहां मैंने एनेक्स्चर A3 में लिखा है. पोर्टल पे मैंने उसे प्रॉपर पहले ब्रीफ 2000 कैरेक्टर्स में देखा और लास्ट में लिखा है फॉर डिटेल्ड रेफर एनेक्स्चर सो एंड सो. आई हैव मेड द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जस्ट स्मॉल बिकॉज ऊपर बहुत डिटेल्ड आ जाते हैं वो जो मुझे प्लीड करने के टाइम पर चाहिए. Likewise, I have kept the grounds of appeal crisp. Do not make those so bulky, and always write the first ground should be journal ground. As per the law, the grounds are usually disposed of in the manner you give them. I try to give my legal grounds first and followed by the factual grounds. But sometimes members may ask you to directly come to the legal grounds or to directly go to the factual grounds. So accordingly, you are supposed to do that. Apart from that, I always give the last ground of appeal that the appellant has the right to add, amend, modify, rescind, supplement, and please be careful as to the prayer part. अब चाहते क्या हो? In certain cases, we have also demanded for the cost because जहाँ पे law was very clear, even then the benefits are not being rendered. So we have asked for the cost. Detailed grounds of appeal. Now, अब उसी एक एक ग्राउंड को लेकर उसमें हम क्या फैक्ट्स देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, दिखाना पड़ेगा. द बेटर योर प्रेजेंटेशन, the likely are the results. So for each ground of appeal, you can give the reference of the case laws wherever required. Do not give unnecessary ones. And this is the performa I follow by giving the detailed submission for every ground later on. Each and every legal provision I am referring is the part of my paperwork. Each and every case law. I am not giving the relevant paragraph. I am attaching the entire case law and marking the relevant paragraph over there, which will help me in pleading. So this was one of the specimen for a refund appeal. अब बाकी अपील्स में तो प्री डिपॉजिट के इश्यूज आएंगे एंड बहुत सारे और आएंगे. सो लेट्स सी
how we proceed for that ahead. Now, oh yes, now when we are coming to the filing rules, that period is a very, very important part of any uh, appeal. So friends, जिस दिन ऑर्डर आएगा वो डे आपको एक्सक्लूड करना है इन कंप्यूटिंग द टाइम पीरियड। और जहां जहां भी आप इसको रेफर कर रहे हो, the day of event is to be excluded, and it is mentioned for where a period is prescribed even by the act, rules, or even under any other law. So that day of event, that day of order is to be excluded. और अगर आपका last day, although वैसे तो हम online filing कर रहे हैं, but still if GSTAT is closed on the last day, so वो succeeding day पे, मैंने बोला था ना कुछ कुछ rules ऐसे हैं जहां पे अभी भी हम मैनुअल में चल रहे हैं। सो इट सेज बट दिस इज अ बेनिफिट गिवन टू द टैक्स पेयर कि अगर लास्ट डे हैपेंस टू बी अ संडे और व्हेन द ट्रिब्यूनल इज क्लोज्ड, इट्स अ नेशनल हॉलिडे, सो द लास्ट डेट फॉल्स ऑन द नेक्स्ट डे। इतने सारे एग्जांपल्स इसमें मैंने लिखे हैं कि किस तरह से डे ऑफ ऑर्डर, और इफ इट इज 3 months इट इज 3 months, नॉट 90 days। सो कोई भी मंथ 30 का है, 31 का है, 28 का, 29 का है, दैट डज नॉट मैटर। एंड सेम प्रेसिडेंट ऑल दो ट्राइब्यूनल के लिए तो यू हैव दिस पर्टिकुलर रूल 3। even for the first appellate, we were following the same pointers that month is a month, maybe a period of 30 or 31 or 28 or 29 days. And also the date of the order were excluded. At that time, I was referring to these Pramod Kumar Tomar. क्योंकि सर 3 महीने हो तो फर्क नहीं पड़ता, but 3 महीने plus 1 month, 4 months plus हो जाए, so that makes your appeal at the first appellate level, and 3 plus 3 यानी 6 plus 1 day भी हो जाए, so that is a very detrimental point for the taxpayer because your appeals will not get accepted. So even 1 day matters. So day of order is to be excluded. मुझे बहुत सारे केसेस में आया था कि आपकी अपील डिलेड है, by referring to the judgment of Pramod Kumar Tomar in case of Paramount Steel, or even the various other judgments, we could get the benefit and it was not considered time barred. I have given all the case laws for your reference. Moreover, yes, this is the discretion. There is a limit of 50,000 rupees. जो ट्रिब्यूनल है वो आपकी अपील डिस्क्रिशनरी बेसिस पे अगर वो 50,000 तक की है तो एडमिट करने से मना कर सकता है एज पर द रूल्स। बट हाउएवर here, as per the president, they are not as of now declining or refusing any appeals. Condonation of delay, a big point. As I already told you, condonation of delay का direct power exercise beyond 3 months tribunal नहीं करेगा. Even जो first appellate की appeals है उनको भी beyond 1 month, मतलब 3 plus 1, 4 months के beyond consider उनका delay condone नहीं करेगा. However, communication versus service will definitely be considered. और फ्रेंड्स, जब आप कॉन्डोनेशन दे रही हैं, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस ऑफ कॉन्डोनेशन. सर्च हो गई थी, टेक्निकल ग्लिच था, सिग्नेटरी और ऑथराइज पर्सन वाज नॉट अवेलेबल, ऑल्दो नाउ वी आर अंडर द ऑनलाइन पोर्टल, सो बी वाउचफुल. और जब आप कहते हो ना मुझे कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ, तो याद रखिएगा आपसे ज्यादा लोग डिपार्टमेंट के पास है, आपने कौन सा पोर्टल का कौन सा पार्ट कब ओपन किया है, और आपको ईच एंड एवरी डे ऑफ डिफॉल्ट एक्सप्लेन करना है. इट हैज टू गो विद एन एफिडेविट. और एक चीज और, एज पर द जजमेंट ऑफ शिवामा वर्सेस कर्नाटका हाउसिंग, इट हैज बीन हेल्ड कि सिर्फ आपको डिले एक्सप्लेन नहीं करना है. अगर 3 महीने प्लस 10 दिन का डिले है, 3 महीने का टाइम पीरियड भी एक्सप्लेन करना है कि क्यों उन 3 महीनों में प्लस 10 दिन बाद, सिर्फ 10 दिन नहीं. सो जब भी आप एफिडेविट दे रहे हो, ईच एंड एवरी डे अप टू फाइलिंग नीड्स टू बी एक्सप्लेन. आई हैव गिवन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो. और सर अगर आपने कोई अपील फाइल की थी, लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो चुकी थी, उसके बाद उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस द अपील फॉर्म इज रीसबमिटेड. माइनर दैट इज टू बी डन.
However, many a times it has been seen that the minor mistakes should not lead to rejections. The justice should prevail. So you can file the rectified appeal form in case wherever the need arises. Sir, I have drafted a pro forma affidavit. So this is as per me, because आपको condemnation के साथ, let me erase it. Yes, आपको कॉन्डोनेशन के साथ एफिडेविट देना है. सो मैंने कंप्लीट एफिडेविट की क्या कारण हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हमने अपील फाइल की, ऑल दोस के साथ आई हैव ड्राफ्टेड वन एफिडेविट परफॉर्मा फॉर माई सेल्फ. और इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन में आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले एप्लीकेशन जाएगा जिसकी फीस है 5,000 रुपीज. सो ये मैंने बताया भी अभी आपको कि fate of delayed appeals, direct condemnation नहीं होगा. However, it involves question of law. So this matter is particularly being taken by the principal bench under them. Apart from that, जो अपील फॉर्म आप करेंगे वो वेरीफाइड होना चाहिए. अब उसके कितने सारे रूल्स हैं. एक तो सीजीएसटी का रूल है 110 कि जो अपील है और मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन है वो रूल 26 के अकॉर्डिंग जो है वो साइन होगा. एंड दिस इज रूल 26. कंपनी के केस में कौन करेगा, इंडिविजुअल के केस में कौन करेगा, एंड ऑल दैट. Here also, when you see rule 20 sub rule 3, every form of appeal shall be verified. Each and every page needs to be verified by the appellant or the applicant or the authorized representative. Endorsement and verification at the foot of every appeal, and the name of the authorized representative should be appear. So in GSTAT procedural rules, there were various rules as to verification, endorsement, and verification. However, on the document released on 10th of June, released or casually released, it has been proposed that the contents of statement of facts, grounds of appeal, annexure filed as documents are true and correct to the best of knowledge and belief. By writing this note, it is to be signed by the appellant and verified or identified by the tax professional will be sufficient. So in the time to come, we might see the change in Rule 22. So one verification of the appellant containing the statement as identified by the advocate or tax professional will suffice. So your multiple signings hai, that will dilute. So let's see how this amendment is being brought. Further, Rule 28 deals with production of authorization for and on behalf. Sir, जो authorized representative है वो appear हो सकता है, plead कर सकता है, file करना उसका प्रेरोगेटिव नहीं है. सो जब आप पोर्टल पे भी जाते हो तो टैक्स पेयर का लॉगिन अलग है और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का अलग है. हम यूजुअली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को पहले रजिस्टर करते हैं और ड्रॉप डाउन में एआर को सिलेक्ट कर लेते हैं. You can add AR later also. There is no hard and fast rule. Rule 28 जो गवर्न करता है, that is different rule. ये आप, for example, I am there. मैं किसी को signing power देना चाहती हूँ कि वो मेरे behalf पे अपील फाइल कर सके. That comes under Rule 28. और जो हम authority to appear है, that is Rule 72. So उसमें आपको hearing and pleading का option है. So please make sure that you know the difference between Rule 28 and Rule 72 to 77. So these are two separate requirements. और जब हम फाइलिंग की बात कर रहे हैं, सारी प्रोसेस ई-फाइलिंग होगी, proceedings hybrid मोड में होंगी. Rule 115 makes it very clear. Signed, verified, uploaded through GST portal. और orders भी ट्रिब्यूनल के, even notices of hearing etc. of the portal are coming on the of the GSTAT are coming on the portal itself. तीन तरह से आप जो है वो साइनिंग कर सकते हैं और वेरिफिकेशन कर सकते हैं. एक्सटर्नल डीएससी से, एनआईसी के डीएससी यूटिलिटी से या आधार बेस्ड यूटिलिटी से. To my luck, wherever I have tried to do Aadhaar based utility, it has not worked. So we have used external DSC, right? And this is how the mode of verification is there on the portal. क्योंकि ये कहता है verification वैसे करिए जैसे portal पर है.
सो पोर्टल पर जो वेरिफिकेशन है उसके ये 3 मोड्स जो हैं वो दिए हुए हैं। अगर आप रॉन्ग बेंच के आगे अपील फाइल कर रहे हैं, सो दैट इज the bench is transferring it to the right bench, but please be watchful because and I have placed one order also of the GSTAT principal bench where they have transferred the case to the through the required benches. Right, so this is how you can see the hearing daily status also. I have taken all these from the portal itself. This is what the beauty of e-filing is, right? So but because इस केस में वो मैटर इन्वॉल्व था, क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था कॉन्डोनेशन को लेकर, सो इसलिए प्रेसिडेंट सर ने इसको दोबारा वापस अपने पास लिया है। ऑल्दो दिस मैटर वाज इनिशियली was not under the principal bench prerogative and was wrongly filed. It was transferred to the jurisdictional Chennai bench, right? अब एक कॉलम है उसमें कॉमन एडजुडिकेटिंग ऑर्डर CAA। सर जो कॉमन एडजुडिकेटिंग ऑर्डर्स है, यस दैट इज वन जहां पे पैन इंडिया जुरिस्डिक्शन था, DGGI के केसेस थे, नोटिफिकेशन 2/22 और उसके बाद 27/2024 में सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आए थे कि जहां पे अगर बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है या एक पार्टी के मल्टीपल नोटिस इन्वॉल्व है, तो जहां पे हाईएस्ट टैक्स पेयर है वहां पे उसका एडजुडिकेशन किया जाएगा। सो जो आपको कॉमन एडजुडिकेशन का ये जो कॉलम है, आपको इसे यस सिलेक्ट तब करना है हियर where the original order of adjudication has been passed by common adjudicating authority. So this is with reference to that common adjudicating authority, which is typically for the all India pan jurisdiction DGGI cases where the appointment of common adjudicating authorities has been done under various GST notifications. So थोड़ी उसकी examples, common adjudicating authority कहाँ लग रहा था, multiple GSTN में जहाँ 1 SCN है या मल्टीपल SCNs है डिफरेंट पैन्स के, सो उसके स्नैपशॉट्स आई हैव प्लेस्ड हियर। एंड यस, इसमें एक सर्कुलर 250 भी आया है कि कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, समझ लीजिए दिल्ली का केस थाने में हुआ है, मुंबई वाला थाने मतलब महाराष्ट्र वाला थाने, सो उसकी अपील कहाँ जाएगी? सर जहां की आपकी CAA का जुरिस्डिक्शन है, जो उसका कमिश्नरेट है, उसकी अपील वहां ही जाएगी। सो चाहे पर्सन दिल्ली का है बट उसका CAA थाने का था, तो थाने ही उसकी फर्स्ट अपील लगेगी और थाने का ही ट्रिब्यूनल आएगा। सो दिस पॉइंट हैज बीन वेल एक्सप्लेन्ड बाय सर्कुलर 250। अब हम लास्ट 2 पॉइंटर्स पे आ रहे हैं। वन इज प्री डिपॉजिट, अनदर इज कोर्ट फी। सो अगर मैं अपील प्री डिपॉजिट की बात करूं, इट इज नॉट 20%, नॉट रिटन एनीवेयर। आप जितना अमाउंट एडमिट कर रहे हैं उसको आपको फुली पे करना है, और जो आपका अमाउंट इन डिस्प्यूट है उसका 10% करना है। कोई 20% का कैप नहीं है। सो मैक्सिमम 20 करोड़ का उसके ऊपर लिमिट है। C+S 20 करोड़ ईच, 20 and 20 40 करोड़, राइट? सो और एक चीज और, सर GST लॉ में क्लियर कट लिखा है कि आपकी अपील एंटरटेन नहीं हो सकती है। मतलब फाइलिंग का ही एक क्राइटेरिया है कि आपका प्री डिपॉजिट पे होना चाहिए। सो मेक श्योर दैट in certain circumstances the tribunal may consider that the pre-deposit has not been made, so they might not raise the defect and it can be outrightly rejected. So you need to be a little cautious as to your pre-deposit filing, right? So that is why I said appeal file clause until and unless you pay the you make the pre-deposit. Again I told you 10% था, तो जो पेनल्टीज थी, जैसे 122 की पेनल्टी थी, 129 में तो जनरली अंटिल अनलेस आप सिक्योरिटी पे फर्निश नहीं कर रहे हैं, तो 129 में तो इंस्टेंट पेमेंट करके ही अपना अपना माल छुड़वाते हो। बट 122 फेक इनवॉइसिंग केसेस में पहले जो पेनल्टी थी वो नहीं थी, लेटर ऑन पेनल्टी इंट्रोड्यूस हुई। तो क्वेश्चन गेम्स क्या 20% पे करना है? नो, नॉट एट ऑल। अगर आपकी फर्स्ट स्टेज पे 0% था, so it's additional 10% only. I have given a proper example in this aspect. अच्छा, अब उल्टा जरा वाइस वर्सा क्वेश्चन लेके देखें। आपने फर्स्ट स्टेज पे ना
50% पे कर दिया, 50%। और लेट्स सपोज ऑर्डर सस्टेन भी कर सकता है, ऑर्डर में से कुछ डिलीशन भी हो सकती है, मतलब 280 करोड़ का एडिशन था, कुछ ड्रॉप भी हो गया। ना द क्वेश्चन कम्स, आप एक साइड तो मुझे बोला एडिशनल 10%, तो यहाँ तो आपने बेनिफिट लिया कि अच्छा पहला 0 था तो मैं एडिशनल 10% ही पे करूंगी। बट अबाउट जहां मैंने ऑलरेडी परसेंटेज में या क्वांटम में बहुत ज्यादा पे किया हो, सर एज पर द रूल इट सेज एडिशनल 10। सो अगर आपने एक्सेस भी पे किया है, सो यू आर सपोज टू पे एडिशनल 10%। बट जहां आप पूरा पे कर चुके हो, think of that, how will you pay additional 10%? So in certain circumstances, there have been case laws. कहाँ गए case laws? Yeah. So adjustment of excess pre-deposit at first appellate stage directly is not allowed. Maybe voluntarily or through the forced recovery, क्योंकि आजकल तो अमाउंट डिडक्ट भी हो जाता है बहुत जल्दी. So in that case, there are certain case laws like Ashirwad Food Industries by Honorable Jharkhand High Court, Global Tech Fab by Honorable Delhi High Court, जिन्होंने एक्सेस पेमेंट का फर्स्ट स्टेज का बेनिफिट सब्सिक्वेंट स्टेजेस पर दिया है. So I have given here 3 case laws where, but that is a point which you need to mention in your appeal if you are seeking any adjustment. देखिए अगर आप बोले रिफंड मिल जाएगा, तो अभी जरा रिफंड पर भी आती हूँ. सो प्री डिपॉजिट इज नॉट अ फी, इट इज मैंडेटरी, अ रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन ऑफ द अपील. प्री डिपॉजिट कहाँ पे करना है? जीएसटी कॉमन पोर्टल पे करना है. और अगर आपका वेरिएंस है, आपको कोई एग्जेम्पशंस मिली हुई है, कोई एडजस्टमेंट्स है, आपके अमाउंट डिडक्ट हो गए हैं, डीआरसी 03A रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो आपको उसकी कैलकुलेशन साथ अटैच करनी है. फ्रेंड्स, डीआरसी 03 इज नॉट अ फॉर्म फॉर प्री डिपॉजिट. 3A के थ्रू अगर आपने 3 भरा है तो उसे एडजस्ट कराइए. सर आपकी लायबिलिटी लेजर में लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, उसे टिक करिए, उसके अगेंस्ट प्री डिपॉजिट करिए. दिस इज द करेक्ट मैकेनिज्म. If you have filed inadvertently DRC 03, then please file DRC 03A. Yes, there are certain portal glitches by GSTN where certain DRC 03A are not getting imported properly. But the correct mechanism is tick the liability, make the pre-deposit. राइट. सो जो आपका टैक्स इन डिस्प्यूट है उसका 10% पे करना, और जो आपने एडमिट कर लिया वो पूरा पे करना है. पेनल्टी ऑर्डर्स पे कोई भी मैक्सिमम कैप नहीं है. सो थिंक ऑफ द हाई एंड ऑर्डर्स अंडर 122 अंडर द फेक इनवॉइसिंग चार्जेस, 10% पेनल्टी प्री डिपॉजिट इज नाउ एप्लीकेबल. और सर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल्स भी इस पे प्रिंट करी हुई हैं to explain certain points. 300 करोड़ का एक पर्सन का एडिशन हुआ सीजीएसटी एक्ट में, लाइकवाइज इन एसजीएसटी ऑल्सो. तो अभी मैं एक साइड लेके चलती हूँ. 20 करोड़ उसने एडमिट कर दिया, तो भाई साहब 20 तो पूरा पे करना है, उस पर कोई कैप नहीं है. अब बचा 280 का 10% इज 28, बट मेरा तो मैक्सिमम कैप है ना 20 का. सो 20 इन सीजीएसटी, 20 इन एसजीएसटी, मैक्सिमम कैप ऑफ रेट सेपरेटली. सो अल्टीमेटली 80 का प्री डिपॉजिट होगा. अब सुनिए, मिस्टर राकेश कुमार की फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी ने अपील रिजेक्ट कर दी और 280 करोड़ की डिमांड अपहोल्ड कर दी. अब वो कहते हैं कि मैं तो 10 करोड़ एडमिट कर लेता हूं. तो ट्रिब्यूनल पे कितना प्री डिपॉजिट करेंगे? अरे भाई जो एडमिट किया पूरा करिए ना. और जो 280 में से आपने 10 तो एडमिट कर लिया, बचा 270 करोड़. 270 करोड़ का 10% इज 27 करोड़. कैप दैट्स 20 करोड़. सबको कितना पे करना है? 20 करोड़ प्लस 10 करोड़, 30 करोड़ ईच हेड, टोटल 60 करोड़. सो ये 20 करोड़ का जो लिमिट है वो ईच हेड का लिमिट है. राइट. प्री डिपॉजिट विंडो और जीएसटी पोर्टल ऐसी दिखती है. प्री डिपॉजिट को आप जब करते हैं वहां से डिमांड कंफर्म्ड की डिटेल्स डालते हैं, डिमांड एडमिटेड की डिटेल डालते हैं और डिस्प्यूटेड को बाइफिकेट करते हैं. सो अगर आपका कोई अमाउंट एग्जेम्प्टेड है या आप सेल्फ कैलकुलेशन देना चाहते हैं, सो यू कैन पुट इट हियर येस और नो. सो जैसे अगर किसी को 50% एग्जेम्पशन मिला है तो दैट पर्सन कैन पुट एंड कैन गिव द डिस्क्रिप्शन है. हमारे कुछ केसेस में जहां पर पोस्ट रिकवरी कर ली गई इवन बिफोर द
period. So we have attached these in the calculation sheets. और उसको हमने proper attach किया है. So now you see, once you make the pre-deposit on the GSTAT portal, GST portal, payment confirmation from GST portal, your pre-deposit is confirmed. Please proceed for appeal fee payment, right? So when user has made the full payment or where user has made the partial payment, pending payment is shown to the user. See, payment required is not completed yet. Do you want to proceed without payment? So there has been a user advisory also that you can attach that. This advisory explains that when the pre-deposit amount is auto-populated from the GST portal, and how to upload the document with an exemption, कहाँ calculation sheet में लगानी है, put that advisory also. अच्छा, मैंने बताया था ना excess pay कर चुके हो first level पर, तो क्या करें? अब देखिए, दो हेड्स थे हमारे C और S, याद है? उनकी 280 करोड़ डिमांड थी राकेश जी की, 300 में से 20 तो एडमिट कर ली थी. 280 करोड़ डिमांड में से फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी ने सिर्फ 150 कंफर्म की और 130 ड्रॉप कर दी. 130 ड्रॉप कर दी. जो 130 उन्होंने ड्रॉप कर दी, तो डिमांड कितनी चैलेंज में है? 150 करोड़. उसका 10% बनता है 15 करोड़, राइट? मैक्सिमम कैप में तो आप अभी आए नहीं हो. सो इफेक्टिव टोटल, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मैं तो ऑलरेडी जो प्री डिपॉजिट कर आई थी, दैट वाज, क्योंकि मैंने तो 280 करोड़ के अकॉर्डिंग किया हुआ था, राइट? आई होप यू आर गेटिंग. सो ओरिजिनल पेमेंट वाज 20 करोड़. हियर इट इज कमिंग आउट टू बी, अब आपको 15 और करना है 10% के अकॉर्डिंग. आप ऑलरेडी 20 पे करके आए हो, जिसके अगेंस्ट आपकी जो अब प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड है, दैट इज ओनली 15 करोड़. सो हाउ द लॉ ट्रीट्स इट, 20% रूल के अकॉर्डिंग 150 का अगर मैं 20% टोटल देखूं तो वो 30 करोड़ बनता था. लेस आपने ऑलरेडी 20 करोड़ पे किया हो, बट आपको बैलेंस 10 करोड़ पे नहीं करना है, क्योंकि वर्ड्स आर एडिशनल 10%. सो आपको 15 करोड़ पे करना है. अब ये जो 5 करोड़ है, जो क्योंकि आपकी डिमांड रिड्यूस हुई है सेकंड स्टेज पे, क्योंकि ये आपको रिफंड मिलना एट दिस स्टेज इज वेरी टफ. सो आपको फ्रेश डिपॉजिट जब आप 15 करोड़ का करोगे, आपके पास जो एक्सेस आप 15 करोड़ का कर सकते हैं, टू एडजस्ट द एक्सेस डिपॉजिट आप केस लॉस को रेफर कर सकते हो, जो मैंने अभी बताए थे. बट रिफंड एट दिस स्टेज इज not feasible according to me. Rest the tribunal is the authority to decide, because your liability in the liability ledger is still positive. But if your liability results negative after pre-deposit adjustment, then of course the refund mechanism as per section 115 can be applied. और अच्छा, refund का क्या rate of interest है? It is 9% in these cases and not 6%. So department से जब आपको अपील जीतते हैं और आपको पैसे वापस आते हैं, so that comes with 9% in case of appeals, 9% interest. So friends, प्री डिपॉजिट में मैंने आपको ये बताया कि प्री डिपॉजिट उसी पोर्टल पर होना है, आपकी कैलकुलेशन शीट से आप अटैच कर सकते हो. प्री डिपॉजिट जो है अगर आप कर रहे हैं तो 10% एडिशनल है, 20% नहीं है. सो एज अ रिजल्ट अगर पहली स्टेज पे 0 था तो आप उसको 10% ही पे करेंगे, नॉट 20. बट अगर आपने पहली स्टेज पे एक्सेस पे किया है तो रूल को सेम रखते हुए 10% करना है. बट कोर्ट्स हैव पास्ड द जजमेंट वेयर दे हैव अलाउड टू सेट ऑफ द एक्सेस मेड एट फर्स्ट स्टेज, स्पेशली जब आपकी डिमांड्स फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी पे रिड्यूस हो जाती हैं. सो आपका एडिशनल 10% ज्यादा बनता है, क्योंकि आप ज्यादा बनता है एज पर द रूल. तो वो सेट ऑफ आप पीछे से लेना चाहेंगे तो आपको केस लॉ रेफर करने पड़ेंगे. रिफंड तभी एलिजिबल हो पाएगा अगर आपका लायबिलिटी जो है वो नेगेटिव चली जाएगी. जब तक लायबिलिटी खड़ी रहेगी, सो रिफंड में नॉट बी अलाउड. आप क्या कैश और क्रेडिट दोनों से प्री डिपॉजिट कर सकते हैं? यस, मनी इज मनी.
We have also you got the judgment of Yasho Industries, which says yes, you can. We have got the circular also, amendment in the budget also. So various case laws, yes, you can go, you can file. अच्छा एक केस पूछूं, आरसीएम की डिमांड थी, क्या उसका प्री डिपॉजिट क्रेडिट से कर सकते हैं? टू माय कंसिडर्ड व्यू आंसर इज अफर्मेटिव, क्योंकि प्री डिपॉजिट है. Pre deposit is not taking the character from nature of liability that is being created. So according to me, I have given this in my PPT also. You will find it here itself. So yes, according to me, even if it is an RCM liability, the pre-deposit can be made from the credit ledger, right? If the pre-deposit is not made, although the law says filing ke time par hi filing of appeal is permitted only on the payment of pre-deposit. However, in TVL Arun Traders, SSE has been allowed to make pre-deposit amount which he skipped inadvertently, and the appeal was accepted. So the motive is promote the justice, right? जैसे ही आप प्री डिपॉजिट करेंगे आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टे हो जाएंगी. सो डिपार्टमेंट आप जहां उसके बाद भी रिकवरी कर रहे हो, इट इज अ डीम्ड स्टे. सो फिर आईए में स्टे एप्लीकेशन क्यों है? सर वो कोई एडिशनल स्टे या मिनिमम स्टे के लिए हो सकता है, बट एज पर सेक्शन 112 सबसेक्शन 9, एज सून एज यू file the appeal, you make the pre-deposit, the recovery proceeding stands stayed. और सर्कुलर 224 ने भी यही कहा था कि एक अथॉरिटी एक अंडरटेकिंग दे दीजिए, अंडरटेकिंग भी बनाई हुई है मैंने, और एक आप प्री डिपॉजिट कर दीजिए, सो ये डिमांड विल स्टैंड स्टेड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्री डिपॉजिट. एंड नाउ आई एम कमिंग टू द अनदर कंटेंशियस इशू ऑफ fee for filing appeal. File litigation is little expensive in GST. So fee for filing अगर आप देखेंगे तो रूल 110 सब रूल 5 है और सेक्शन 112 सब सेक्शन 10 है. सो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को देते हैं, राइट, पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को देते हैं before the tribunal in an appeal for rectification of error or for any other purpose, for restoration of an appeal or application, it has to be accompanied by the fee as given in the rules. So in an appeal for rectification of errors or for any other purpose, may it be condonation or restoration of appeal, accompanied fee needs to be given. So rule 110(5) prescribe करता है. सर एक बात पूछूं, प्री डिपॉजिट में आपने कहा 20 करोड़ का कैप है, 20 + 20 दे दो, राइट? इसमें अगर आप 10% ऑफ टैक्स करोगे उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट कोर्ट फी में अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट लगाते हो तो 5 + 5 क्यों नहीं करते? 5000 CGST हेड, 5000 SGST हेड. रीजन, दीज वर्डिंग डिटर्मिन्ड इन द ऑर्डर ऑफ अगेंस्ट. सर एक अपील है एक ऑर्डर के अगेंस्ट, सो उसमें जितना सीजीएसटी, जितना एसजीएसटी, जितना आईजीएसटी का अमाउंट लगा है, कोर्ट फी हेडवाइज नहीं जाएगी because of these wordings determined in the order appealed against. So no headwise, no tax reference. It is 5,000 and maximum 25,000. No 5 का डबल 10 और 25 का डबल 50 वो नहीं होगा. पेनल्टीज में वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें सेक्शन 20 बोलता है आईजीएसटी एक्ट का कि उसको डबल करो, फी में नहीं बोलता है. और वैसे भी ये फी हेडवाइज नहीं है, ये एक ऑर्डर के अगेंस्ट है. तो ये एक ऑर्डर के अगेंस्ट अमाउंट डिटरमाइन टोटल करके मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट जो है वो लगाई जाएगी. सो 1000 रुपए का फी है अगेंस्ट 1 लाख रुपीज ऑफ टैक्स. अच्छा, टैक्स, आईटीसी, डिफरेंस इन टैक्स, फाइन, फी और पेनल्टी, इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड, इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन्ड देयर. सो जब, और
जब आप अपील की कोर्ट फी कैलकुलेट करेंगे, और सर प्री डिपॉजिट में भी जो इंटरेस्ट और पेनल्टी होती है, कॉन्सिक्वेंशियल पेनल्टी जैसे 73 या 74 की लगी है, उनके लिए कोई भी प्री डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ टैक्स अमाउंट का ही प्री डिपॉजिट जाता है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट की अपील कर रही हूँ तो व्हाट विल बी द प्री डिपॉजिट? एंड गोइंग बैक अ लिटिल टू द प्री डिपॉजिट, answer is no pre-deposit will be applicable as per my considered view. I have given the judgment also in the PPT. If you permit me to show that, yes, is it the one? You can find it here. I'm little lost in it. So interest के केस में प्री डिपॉजिट में भी आपको प्री डिपॉजिट नहीं देना है, even if you are disputing interest only. What about court fee? What about court fee? सर कोर्ट फी में इशू ये है कि 110 सब रूल 5 के मेन में इंटरेस्ट इज मिसिंग, बट जो प्रोवाइजो है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड किया हुआ है। सो अब पहले तो देखूं कि रूल का एक्सेप्शन है प्रोवाइजो, बट अगर वो कहता है कि अगर आपके ऑर्डर में ना टैक्स है, ना इंटरेस्ट है, ना फाइन है, ना फी है, ना पेनल्टी है, तो आपको 5000 का बेसिक अमाउंट देना है, राइट? तो बट मेरे तो इंटरेस्ट है, सो आई एम नॉट कमिंग अंडर द प्रोवाइजो, इसलिए मेरी 5000 तो कॉस्ट नहीं। कैसा इंटरेस्ट हो सकता है? 180 डेज का डेटर्स का इंटरेस्ट है। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, आई एम नॉट फॉलोइंग अंडर द प्रोवाइजो, आई एम कवर्ड अंडर द मेन सेक्शन, और वहां इंटरेस्ट वर्ड है ही नहीं। However, portal is calculating if you are disputing only interest that they are considering. So what are the scenarios that if your court fee, you are doing it for demand and enforcement order, it is 1000 for every 1 lakh with a minimum maximum cap of 5000 or 25,000. फी लगेगी 5000 फॉर नॉन टैक्स ऑर्डर जिसमें क्वांटम्स नहीं है, रिफंड्स हैं, रिफंड्स में भी लगेगी, रजिस्ट्रेशन इश्यूज में लगेगी, एलयूटी इश्यूज में लगेगी, रिस्टोरेशन ऑफ अपील के लिए भी सेम पेनल्टीज है एज फॉर द फर्स्ट टाइम फाइलिंग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सर रिस्टोरेशन क्या है? जब आपकी अपील डिसमिस होगा, रिस्टोरेशन के सेपरेट प्रोविजन है दैट वी विल डिस्कस इन some subsequent PPT or subsequent deliberation. Rectification of errors has been a juggling issue. Although the rule says koi court fee nahi lagegi, and we are expecting the amendment in Rule 119 also of tribunal rules, tribunal procedural rules, ki that will also be reduced. Tribunal के procedural rules भी फी प्रिस्क्राइब करते हैं हर इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन के लिए, और अभी तो उसमें आपकी एडजर्नमेंट्स भी कवर्ड है, बट इन द टाइम्स टू कम वी माइट सी दैट एडजर्नमेंट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस, सो अ बिग रिलीफ इन दैट सेंस। सो अभी इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए 5000 की कोर्ट फी है, इंटरलॉक्यूटरी के लिए एक्सेप्ट रेक्टिफिकेशन 5000, अपील टू GSTAT एज पर रूल 1 लाख के लिए 1000। अगर आप रिफंड रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा की अपील लगा रहे हो विच इज नॉट कवर्ड एनीवेयर इज 5000। फी फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द ऑर्डर, अगर पार्टी के अलावा उसको कोई अप्लाई करता है तो ₹5 पर पेज, right? So this is how the court fee is to be calculated. So I have touched upon its certain issues. अब इसमें कि अगर मैं 180 डेज का इंटरेस्ट कर रही हूँ, देखिए अगर तो कॉन्सिक्वेंशियल इंटरेस्ट है, कॉन्सिक्वेंशियल पेनल्टी है, सो डेफिनेटली द कोर्ट फी विल नॉट अराइज। बट व्हाट अबाउट इफ इट इज नॉट कॉन्सिक्वेंशियल एंड 180 डेज का इंटरेस्ट है? एज ऑफ नाउ पोर्टल इज एडिंग एंड कैलकुलेटिंग। फ्रेंड्स, मैंने कोर्ट फी के ऊपर हर तरह की कैटेगरी बनाई है, टैक्स ऑर्डर्स हो, स्मॉल डिस्प्यूट्स, मीडियम, मिनिमम और मैक्सिमम कैप लगाकर that is given. If you have any of these issues, you can refer, considering the time constraint. अगर टैक्स में इंटरेस्ट साथ है, so it is consequential, should not be separately added. It should be on the tax, the court fee. However, if it is admitted amount and these are disputed amount, a big question mark. Let's see how tribunal takes it further. As of now,
Yes, because that is disputed, so will get added. Right? Only penalty orders, now 10% penalty is applicable without the caps. This is how the court fee looks like. और court fee manually calculate होगी कि portal calculate होगी. अगर आप where court fees paid manually directly from the Bharat Kosh, so then you have to enter the details. However, if where the court fee is paid through GSTAT portal online, then the court fee is calculated automatically by the system. Right? There are various options for the bank payments and all. I'm not touching upon that. Friends, rule 18 is very, very important. अगर आपके मल्टीपल OIO हैं और एक OIA है तो भी आपको मल्टीपल अपील्स फाइल करनी है. इन माय केस मैंने 10 रिफंड एप्लीकेशंस लगाई थी जो रिजेक्ट हुई थी क्योंकि उसके OIO जो थे वो मल्टीपल थे 10, चाहे OIA एक था. मुझे मल्टीपल अपील्स फाइल करनी पड़ी. सो ये तो 18 सब रूल 2 है. 1 अपील पर ऑर्डर, मल्टीपल ऑर्डर इन ओरिजिनल, मल्टीपल अपील. हाँ, अगर आपके एक ऑर्डर के अगेंस्ट मल्टीपल SCN है, रिफंड क्लेम्स है, डिमांड लेटर्स है, तो आपको एक ही अपील करनी है. अगर मल्टीपल पर्संस इन्वॉल्व है, डायरेक्टर्स आर इन्वॉल्व विद द कंपनी फॉर द पेनल्टी पर्पस एंड ऑल, मल्टीपल अपील्स. अब अपील में आपको देना क्या क्या है, हैव अ लुक. ये फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था वो रूल 18 से ही निकाला गया है. ऑनलाइन फाइलिंग ऑन द GSTAT पोर्टल, कॉज टाइटल होना चाहिए इन द GST Appellate ट्रिब्यूनल, कंसेक्यूटिवली नंबर्ड पैराग्राफ होने चाहिए, टाइम न्यू रोमन वैसे इसमें यूज होता है, डबल स्पेसिंग का यूज आपको करना है. पार्टीज वैसे तो आई एम लिटिल एप्रीहेंसिव एज टू नंबरिंग ऑफ पार्टीज. Might be it is for the consolidation cases, because otherwise if the multiple parties are involved we have to go for the multiple appeals, right? Party ka naam, parentage means the complete details, GSTIN, description, address needs to be given. So based upon this I have drafted, देखिए मैंने टिक टिक लगाया है. टाइटल हो गया, ऑर्डर इन अपील हो गया, फुल नेम हो गया, पेरेंटेज हो गया, GSTN हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया. So this is how it should be done. पैराग्राफ फॉर्म में होनी चाहिए. All these requirements are written there, numbered consecutively होनी चाहिए. कितनी अपील्स फाइल करनी है that is given. और सर मैंने जो अभी आपसे डिस्कस किया उसकी मैंने एग्जांपल भी बनाई है. OIO मल्टीपल थे, रूल 18(3) कैसे एप्लीकेबल होगा. XYZ तीनों ऑर्डर्स के अगेंस्ट जा रहा है. सो चाहे एक OIA है बट अगेन मल्टीपल अपील नीड्स टू बी फाइल्ड. And this is what we have done in our party case. Contents क्या होंगे, grounds of appeal होंगे. Those all requirements are given under rule 20. So this is the filing checklist और performa मैं already दिखा चुकी हूँ. Translation of documents अभी leniency में covered है. Until or unless other party demand करे या bench demand करे, so translation of documents is now, as of now, under leniency, is not mandatory. और सामने वाले से उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा, इसका अमेंडमेंट भी प्रपोज्ड है. सो ये जो पहले इसमें लिखा गया था कि द अदर पार्टी शुड एक्सेप्ट इट, सो दैट इज लाइकली टू बी read down. So जो affidavit as to certify that this is the true translated copy of the document, I have made one of the affidavit for my reference which I have shared here. Friends, 30 days का टाइम पीरियड है, 7 days मिनिमम, 30 days मैक्सिमम, जो कि आपको डिफेक्ट्स रिमूव करने हैं. बट बहुत सारे पोर्टल पे यू माइट सी 15 दिन का टाइम शो कर रहा है, विच इज नॉट देयर. सो मैंने हर रूल में कितना कितना टाइम पीरियड दिया है, कहाँ डॉक्यूमेंट्स के लिए दिया है और कहां पर अपील को ठीक करने का दिया है. सी, जर्नल डिफेक्ट और फॉर्म ऑफ अपील. फॉर्म ऑफ अपील का डिफेक्ट रूल 32 में है, रूल 24 में जर्नल डिफेक्ट इन अपील और इट्स डॉक्यूमेंट्स है. कौन सा रजिस्ट्रार लेवल पे है, कौन सा बेंच लेवल पे है. सो आई हैव मेड द सिनॉप्सिस कंपेयरिंग रूल 24 विद रूल 32 बिकॉज आई माई सेल्फ वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड कि why it is a repetition. So I could make out, I have drafted this table कि कौन सी सिचुएशन में कौन एक्ट करेगा, रजिस्ट्रार और ऑफिसर. हाउएवर
Again, there is a proposed amendment in this rule on the 10th June document कि रजिस्ट्रार की जगह ये पावर कई जगह डिवीजन बेंच को दी जाए. 15 दिन का कोई टाइम पीरियड एज सच नहीं है, प्रपोज्ड है. एज ऑफ नाउ इट इज 7 और अप टू 30. सीयू का टाइम पीरियड 45 डेज है क्रॉस ऑब्जेक्शंस का, राइट. एंड व्हाट इज द ड्रेस कोड? मैंने साक्षात फोटोज आई हैव गिवन हियर. अगर आपकी ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब्ड है आपके कोड ऑफ कंडक्ट में तो वो पहन, लाइक एडवोकेट्स, like right in front of you. If it is not there, see, there is a band here because it's prescribed for advocates. If it is not there, then you are supposed to be in this dress. The one right I am wearing is the black coat with the for the ladies, black coat with the white dress underneath. Maybe suit, maybe any other dress or a sari you can wear. And for gents, it's a close collared black coat or open collared black coat. Yes, coats are exempted in the summer weather. So if you are a relative of a party, you are the regular employee, you are the dem. In that case, you are exempted from the dress code. So, but please make sure tribunal is very particular as to dress code. So arrange your wardrobe accordingly. So I've given the entire details of and which period from 15 April to 31st August that there is dispensation of the black coat. Who will be the respondent? I have already discussed rule 33. So friends, with this, I am not going for, cross objection also I have mentioned will go in APL 06 and within 45 days from the date of notice you have to give that. I am as of now not going into the further IA rule 35, rule 36, reply kaise dena hai and all that I keep for the next time. Hope you enjoyed this session. And yes, a few things I want to bring the GSTAT portal at a glance. देखिए इसमें cause list online आएगी, केस का status है, judgments हैं. This is how the cause list looks. And see, I have taken it for the Kolkata bench cause list, which is being published. The hearings are going on. This is how the case details looks like, case filing, party details. Each and every stage can be checked. This is what you find good in e-filing. Everything at your disposal without the bulky pages. And definitely you can use your effective AI tools, etc., to extract the data. So which see admission ke liye hearing hua hai, defects ke liye, so entire case history is also at your disposal. And these are the few defect free register is listed. This is how the hearings are being given. And this is how the prima facie GST portal looks like other than the filing windows. Stating कि कैसे members सुनेंगे, क्या e-filing, and lots of informative videos have been uploaded. So you can check those videos, you can take those supports. Yes, this checklist of 29 pointers is a big, hurdle in between. However, GSTAT is considering the overhauling of this. So cause list and all, we will see next time when we meet. So now I end up and how the hearings will be going on, how the additional evidences will be taken. So lot more issues, lot more rules. और एक बात बोलूं, जितनी बार rules पढ़ती हूँ, I every time get some or another additional point. So keep reading, keep enjoying, keep filing, keep the Josh upright, and thank you so much for the patient listening. Thank you.